Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Yes, और hopefully we'll have all in here because काफी सारा discussion करना है from the match reaction, Manchester United fans over the moon. Pretty sure हाँ pre-season ही है, but I'm 100% sure काफी discussions करने हैं. A lot of reactions. मतलब एक first look होता है football is back. But what's more, especially Chelsea fans. भाई Chelsea fans, there is news and there is a lot of good news, I would say. और at the same time good news खाली चेल्सी फैंस के लिए नहीं है, बार्सिलोना फैंस के लिए भी है. एब्सोल्युटली. तो यस, गेट इन देयर एवरीवन, गेट इन द लाइक्स. एब्सोल्युटली यार, ये पहला चीज बोलता हूँ, लाइक यू ऑलवेज नो, वो हमारी गाड़ी जो चलती है ना, उससे चलती है. तो लाइक्स कर दीजिए और शेयर करो तो बढ़िया है यार. आप अगर शेयर कर दो तो बहुत ही बढ़िया होगा. यहाँ पर क्विक शाउट आउट देता हूँ फॉर एवरीवन हु जॉइंड इन, मींस अ लॉट टू मी. अभिषेक स्वाइन मैं देख रहा हूँ. चार यूनाइटेड फैन ऑफ कोर्स. सीएफसी ब्लूज, थैंक यू. यस यस. तेजस शर्मा, डेफिनेटली भाई, बहुत अच्छा लगता है आप सपोर्ट करते हो. रॉकी एम एज वेल, यस. हैप्पी न्यूज देयर. एंड बट द राइट ट्रैक, लुक ऑलरेडी दे दी है ट्रेलर सीएफसी ब्लूज. गौरव पंडित, आज भी यस एब्सोल्युटली भाई. क्रिकेट अगेन, आई थॉट मैं क्रिकेट स्ट्रीम भी करूंगा ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस आज रात को, बट द वे थिंग्स आर गोइंग भाई, मैच ही खत्म हो जाएगा तब तक, जब तक मैं प्लान करूं. सो रादर हम स्ट्रीम करने वाले दोनों ही चैनल्स में एज ऑलवेज. लाइक आपको पता है भाई, रोज शाम को एक होता है स्ट्रीम यहाँ पर या वहां पर, और रात को होता है अदर चैनल में, वो रोज होता है. तो एवरीवन डू नॉट मिस. एंड उसके लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए सब लोग. एवरीवन डू हिट दैट बेल. बट सेफ इन द हाउस, अ मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. बिल्कुल भाई, हेलो. एंड मटाटा यूनाइटेड एज वेल. हैप्पी मटाटा यूनाइटेड. जस्ट एक फर्स्ट इंप्रेशन, हाउस ऑफ एरिक टेन हाग. Yeah, in case I was watching the match and that's why I didn't stream during that time. आज कुछ तो बहुत होंगे तुम. Exactly भाई. 87 for in the house, a Barca fan, and yes, we will talk about Barca as well. Lot of news there. And Gnabry का भी news आ रहा है. Arsenal fans बिल्कुल नहीं खुश है क्योंकि वहां पर भी कुछ लग रहा है. We'll be discussing absolutely. And hit the likes, get in the likes. And फरहान भी आते हुए. तेनाकुक Liverpool. And pre-season is just relax. It's just pre-season, like they say. बट लेकिन बात करना पड़ेगा भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, व्हाट वर यू मोस्ट इंप्रेस्ड विद आज का मैच में, और इवन न्यूट्रल्स जो भी देखे. हाँ, इट वाज अ बैंकॉक सेंचुरी कप, नॉट रियली द ईपीएल, और नॉट रियली द कैराबाओ कप इवन. बट द फैक्ट इज इट वाज द फर्स्ट मैच. फुटबॉल इज बैक एंड फर्स्ट मैच अंडर एरिक टेन हाग जो हम देखे हैं. ठीक है, मे बी दे हैड प्रैक्टिस मैचेस, इन हाउस मैचेस और समथिंग लाइक दैट. First match that you actually watched, beat not competitive, but let's get it right. Klopp also would want his first team players to be fit and running. और was it not a clear case? Clear case. हाँ, लिवरपूल ने काफी यंगस्टर्स के साथ शुरू किया था. मैं लाइनअप भी दिखा देता हूँ, क्या इतना क्यों बात कर रहे हैं. Yes, people will come to lot of transfer stories as well. So do stick on, hit the likes. ज्यादा लोग आएंगे बढ़िया रहेगा भाई. तो लाइक्स कर दीजिए और yes, do hit the like on my community post on Almighty Sports Plus भी अगर हो सके तो, so that more people get to know about this, right? लेकिन आप देखिए यार, यहाँ पर इतने सारे चेंजेस होते हैं प्री सीजन में. ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है मुझे. ऑलवेज इट्स विद एवरी क्लब, नॉट ओनली जो आज के लिए, राइट. लेकिन यहाँ काइंड ऑफ सरप्राइज लिवरपूल फैंस यार, दे स्टार्टेड विद बेसिकली नॉट देयर फर्स्ट टीम एट ऑल. इनफैक्ट मतलब मे बी आप आर्ग्यू करोगे, मे बी ओनली हेंडरसन, एलिसन एंड फर्मिनो जो उनका सेंट्रल काइंड ऑफ थ्री फिगर्स थे, दोस आर द ओनली पीपल हु काइंड ऑफ स्टार्टेड. लेकिन लुइस डियाज भाई, मैं तो पीपल हु वॉच्ड ऑन फीफा नो दैट मैंने खरीदा है लुइस डियाज को. और देयर इज अ रीजन फॉर इट. हाँ, नॉट जस्ट बिकॉज़ देयर आर कपल ऑफ लिवरपूल फैंस जिन्होंने सजेस्ट किया है, एब्सोल्युटली वो भी है. लेकिन भाई लुइस डियाज इन रियलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स टू वॉच. हाँ, आई सेड इट लाइक अ चेल्सी फैन एज वेल, बिकॉज़ some people are like wow, what मतलब they play as though यार वो सच में फीफा खेल रहे हैं on the pitch, and Luis Diaz is one of them, and that's why I love him, right? लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू हैव टू गिव इट टू दैट. हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम शुरू की है ऑन पेपर, लेकिन इवन दे आर आफ्टर प्री सीजन, तो आप ये नहीं बोल सकते दे आर मे बी मच रेडी और समथिंग लाइक दैट, राइट. और काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन भाई, 4-2-3-1 फॉर्मेशन टेना खिला रहे हैं अगेन. आपको पता है भाई, आयाक्स में वही खिलाते थे. यू हैड टैडिच इन बिहाइंड सेबास्टियन हैलर, यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस इन बिहाइंड मार्शियल. लेकिन व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट? द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज द फ्लो ऑफ फुटबॉल. The flow of football was भाई साहब, मतलब it was looking like, I know it's just pre-season again, yet again मैं disclaimer बोल रहा हूँ. The fact is वो लग रहा था यार एक
फ्लो केमिस्ट्री लग रही थी एक बेसिकली लग रहा था कि यार ऐसा नहीं लग रहा था कि यार इट्स जस्ट प्री सीजन. हाँ देयर वर अ कपल ऑफ मिस्टेक्स ऑफ कोर्स फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड्स स्पेशली लिवरपूल. लेकिन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्ड एट द पार्ट. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 4-0 जो स्कोर लाइन फाइनली हुआ ना वो होना चाहिए था फर्स्ट हाफ में ही. या आई एम रियली राइट. मतलब आई नो एट द एंड ऑफ द डे हु स्कोर्ड यार सैंचो फ्रेड मार्शियल स्कोर्ड. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिएगो डलो ने एक्चुअली मारा था बार या पोस्ट को तो वो काफी अच्छा मूवमेंट था. बट लिवरपूल के लिए कौन सा इंप्रेसिव प्लेयर था और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी बोल दीजिए कौन सा सबसे इंप्रेसिव लगा मुझे. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट आई रियली फील भाई ब्रूनो फर्नांडिस मेड सम ब्रिलियंट passes and runs as well. लेकिन आई वाज इम्प्रेस्ड विद सैंचो. आई मस्ट से कि सैंचो वाज लुकिंग शार्प भाई. सैंचो वाज लुकिंग शार्प. और इज एंथनी मार्शियल योर नंबर 9? मतलब व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश. फ्रेड wasn't too bad. हाँ मैक्टोमिने फ्रेड अगेन वही प्रॉब्लम है. लेकिन देन सेकंड हाफ में लेट ऑन ऑल द सब्स्टिट्यूशन स्टार्टेड एंड द फ्लो वेंट अवे ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. और फिर आई लिवरपूल और लिवरपूल के ऑल द फर्स्ट टीमर्स वर बैक इन द सेकंड हाफ सो दैट लुक्ड गुड एज वेल. लेकिन अगेन कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन यार. लेट्स गेट अप द लाइक्स. ज्यादा लाइक्स हो तो यूट्यूब अपने आप बोलेगा भाई कि हम लाइव है और हमें डिस्कस करना है काफी सारा न्यूज स्पेशली भाई चेल्सी बार्सिलोना फैंस बायर्न म्यूनिख फैंस भाई मिस मत करिए. काफी सारा हमें डिस्कस करना है वो तो ट्रांसफर विंडो एज वेल एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड तो है ही. खैर तो यहाँ पर सक्षम बोलते हुए Gnabry, Koulibaly, maybe De Ligt as well. Let's see अगर इतना अच्छा है. Bangkok Century Cup, you will never sing that. Pratham, nice one, bhai. Eric Bhai is a beast if only he was not injury prone. Okay, by the way, मुझे हाथ अपना ऊंचा करना है क्योंकि मैंने कल बोला था in my live stream कि भाई Darwin Núñez is injured. He might be out for a couple of weeks. लेकिन नहीं, he was not injured. He was back. और हाँ मैं बोलूंगा पहले 5 मिनट he looked lot rusty. He missed a sitter. Let's accept that. लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग साला का शॉट था. साला आल्सो बाय द वे हिट द पोस्ट था. साला का शॉट था एंड काइंड ऑफ रिबाउंडेड फ्रॉम द गोलकीपर और पोस्ट आई डोंट नो और वो आया. एरिक बाई did a good second half performance or if not for his challenge Darwin Núñez would have scored there. They will never sing Bangkok Century Cup. Even Matata United agrees. Malaysia was amazing in the back. Well again it was towards the end that he came on and yes he looked sharp इतना तो जरूर बोलूंगा. लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस Alex Telles is still playing. Alex Telles played center half second half में. क्या लगा उसके बारे में? Let me know. Anyone neutrals भाई Alex Telles could you know as an Eric Ten Hag think about going 3 in the back and play Alex Telles as left center back जैसे डेली ब्लिंड और मार्कोस रोहो खेलते थे. काफी इंटरेस्टिंग. एंड यस आकाश वर्मा हम बात करेंगे एब्सोल्युटली भाई आकाश अबाउट कुलिबाली. रिलैक्स इज प्री सीजन अंकित भैया. नितेश भाई फुटबॉल इज बैक. मैं तो उससे एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. कुलिबाली विल साइन फॉर श्योर. लेट्स सी क्या होता है. एंड देन इट्स अ टैक्टिकल डिफीट सक्षम बोल रहे. ओके फेयर इनफ. Darwin Núñez is a European and Carroll. Oh my God! Wow! Bodying Darwin Núñez already. Interesting. Who needs a CDM under ETH? Well, that is a thing. Matata United, you have a point. काफी अच्छा पॉइंट है. हाँ क्योंकि वही है if you have that flowing football जो हमें देखने को मिला which is something वो मैनचेस्टर फैंस मिस कर रहे हैं. again just pre-season. लेकिन there was a natural flowing football. उसके लिए यार maybe an Eriksen will suit perfectly. एरिक्सन को बॉल मिलेगा एक पास करेगा बैंग वहां पर ब्रूनो फर्नांडिस और हु नोस क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अभी तक तो डेफिनेटली दे विल बी एट द एंड ऑफ थिंग्स राइट. एब्सोल्युटली. आई थिंक वी शुडंट जज Darwin Núñez too early. He might do wonders. Use the word might. Yeah, might exactly. Zidane Iqbal, hello Ankit bhai, hello Flame Boy, कैसे हो भाई? सब अच्छा है I hope. And yes, what about Pelestri? Pelestri भी मतलब I don't know मतलब there are players out there जो काफी इंटरेस्ट था. Okay, what about the Liverpool right back? And yes, again we'll come to transfers. लेकिन मैं सोचा फर्स्ट फ्यू मिनट्स में भाई साहब yet again Liverpool get another player from the academy. Mabaya. भाई मबाया जो था he was a beast. He looked like a Maicon. मतलब भाई नो मैं थोड़ा सा Maicon की बेइज्जती कर रहा हूँ वहां पर. Maicon was a legend. लेकिन he looked almost like a Maicon to me. और फिर that moment came when he actually was so lazy in his clearance और वो गोल हो गया. सैंचो ने मारा गोल फर्स्ट गोल राइट रिमेंबर. तो वो वाला जो गोल था Sancho was so calm by the way. I have to say Sancho looked really good in my opinion. लेकिन Mabaya looked good. अगर वो Mabaya ठीक से हाँ he is more like a Trent but Maicon is Trent. ठीक है जो फॉरवर्ड जा रहा है लिवरपूल लेकिन he is not coming back enough. So I think ये अगर ठीक से मोल्ड किया जाए Mabaya looks like someone who can play for the first team. I don't know आप अग्री करते हो कि नहीं अग्री करते हो. हाँ काफी बुरा काइंड ऑफ मोमेंट था उसके लिए बट
Overall, I think he looked the part. You know what I mean? MUFC को आज अरे यार भाई जग गए इट्स अ न्यू मैनेजर सिंड्रोम एज वेल थोड़ा वो भी है everyone playing for the places लेकिन having said that you have to give it to Manchester United last two yes absolutely and I think United fans are being overreactionary am I not being overreactionary for United fans imagine well, I'm a Chelsea and a AC Milan fan think about this big up to NS Sports TV big up Nipun bhai kaise ho how are you all good I hope Nilesh as well hello and yes some good news for Chelsea fans as well. So do stick around, and of course, Barca fans. Liverpool were missing a lot of chances. The problem which needs to be checked at those had to be fresh players, but Liverpool were not looking fresh, whereas Man United played free flowing football. Couldn't agree more. Dead Sky Gaming, big up to you as well. अंकित भाई अब तो हो गया ना रफीनिया डन हाँ चलो चलो थोड़ा सा आ जाते हैं रोनाल्डो बोल रहे वी डिस्ट्रॉयड लिवरपूल well, let's see. We'll look at this. Look at this. We'll definitely look at transfers and we'll come back to the game, of course. अगर आप interested हो game के बारे में और detail में बात करने के लिए, I'm more than happy. लेकिन for now, breaking news क्या है? Definitely भाई this अच्छा चलो ये कर देते हैं. पहले I won't kind of boast around. लेकिन the fact is yes, there was basically news और news आ गया है रफीनिया का. और आई नो चेल्सी फैंस चेल्सी एज अ क्लब विल नॉट बी टू हैप्पी अबाउट इतना टाइम खोटी हो गया उसके बाद ये हुआ बट अगर लेट्स बी ऑनेस्ट रफीनिया हैड अग्रीड फर्स्ट द डील ऑफ बारसा बाय हिमसेल्फ करेक्ट तो हम नहीं बोल सकते यार वी कैन ऑफ डिजर्व दैट एटसेट्रा नो टीम डिजर्व्स इट एज लॉन्ग एज दे वन इट फेयर इनफ ठीक है तो नो वन इज सॉल्टी हियर हैविंग सेड दैट यार मैं अभी भी क्वेश्चन मार्क करूंगा जस्ट लाइक यस्टरडे कि भाई रफीनिया इज गोइंग विद डेम्बेले आल्सो बीइंग देयर तो थोड़ा सा फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए मेरे डाउटफुल है प्लस वर्ल्ड कप विनर है Having said that, Fabrizio का आया भाई ट्वीट चार घंटे पहले आया बार्सिलोना हैव फाइनली सबमिटेड द ऑफिशियल बिड जो लग रहा था लास्ट 24 आवर्स से चेल्सी फैंस स्पेशली मी इंक्लूडेड समवन वर लाइक नहीं भाई अभी तक ऑफिशियल बिड नहीं हुआ है अभी भी 1% चांस है नहीं अभी हो गया है ऑफिशियल बिड भाई लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसीलिए मैं आता हूँ कमिंग बैक टू यस्टरडेज स्ट्रीम जो भी देखे थे और जो नहीं देखे थे प्लीज देखिए बिकॉज यस्टरडे का स्ट्रीम बहुत ही बवाल मचा था मैं बोल रहा हूँ हैविंग सेड दैट and yes, we'll come to Chelsea, we'll come to Juventus, Bayern Munich and other transfers, absolutely भाई. लेकिन यहाँ पर ये एड्रेस करना मुझे क्विकली जरूरी है. Look at the numbers. Fabrizio बहुत कम बार will get the numbers wrong. I know I agree that Gerard let me get the name right. Gerard Romero is definitely number one Spanish kind of news outlet there. Having said that, भाई he takes it from Gerard Romero उन्होंने वीडियो भी किया है और मैंने देखा है वीडियो फेब्रिशियो का भाई साहब ने बोला है भाई लीड्स आर सेट टू एक्सेप्ट बट इट्स अ 58 million euros fixed fee और anyone remembers what was the fixed fee that Chelsea had offered anyone there हमने फिक्स किया था 60 million pounds there is a difference but up to 68 million euros with add-ons तो यार इन्होंने एड-ऑन्स मेरे ख्याल से 10 मिलियन यूरोस का दिया हमने एड-ऑन्स 5 मिलियन पाउंड्स का दिया था इट्स काइंड ऑफ सिमिलर एड-ऑन्स और हमारा जो था अगेन डील एट फाइनल स्टेजेस मे बी वी वर पेइंग इट वन टाइम आई डोंट नो उनका लग रहा है कि दे आर अग्रीड टू पे इट वन टाइम बारसा लेकिन अगेन व्हाट अबाउट फ्रेंकी डी योंग विल कम बैक टू दैट all parties waiting for Barca to be able to register Raphinha then it will be signed here we go soon so this is done people yes Fabrizio Romano ने भी बोल दिया here we go soon this is going to happen absolutely but breaking news क्या है अभी आया है Barcelona have already discussed easy and difficult add-ons included in the Raphinha deal with Leeds no issues agreement in place in the morning for 58 million guarantee plus bonuses adding up to 68 million euros the bid is official procedures to register Raphinha key final step with Barcelona so no surprises there ये वाला इस बार होने वाला है लेकिन भाई साहब और मैं लाइन से यहाँ ब्रेकिंग न्यूज करने वाला हूँ फॉर पीपल हु माइट हैव मिस्ड इट जो लोग काम पे थे जो लोग स्कूल में थे जो लोग मैच में देखने पे बिजी थे दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड लास्ट आवर एज वेल हाँ काफी रिपोर्ट जा रहे थे आई हैड बेसिकली शेयर कल के रात में फीफा के स्ट्रीम में वाया सीएफसी ब्लूज एंड अदर्स उन्होंने शेयर किया था और मैंने डिस्कस भी किया था क्विकली दैट यार दिस इज व्हाट इट इज नाउ Fabrizio ने कंफर्म किया है Chelsea have started to explore the situation of Serge Gnabry Raphinha is heading to Barca as we know Chelsea wanted to understand how is the state of the negotiation with Gnabry and Bayern Munich over new contract no approaches from Arsenal or Man City yet Chelsea interested so we are interested it doesn't mean that Chelsea को मिलने वाला है Serge Gnabry having said that मेरा लॉजिक यही था कल we always live by logic तो मेरा लॉजिक ये था एवरीवन आई डोंट नो आप लोग अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो लेट मी नो एज वेल
लेकिन व्हाट डू यू थिंक? और ये मैं बोल रहा हूं भाई साहब, सर्ज ग्नाब्री हैज समवन who's lived in लंदन, ठीक है, वो लंदन में रहा है, काफी सालों तक रहा है इनफैक्ट। यस, एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि खुद ने बोला है कि यार नहीं, आई डोंट सी माई सेल्फ काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट चेल्सी कंसिडरिंग द आर्सेनल सिचुएशन। लेकिन वो थी कल की बात। आज की बात क्या है? यस, ही हैज लिव्ड इन लंदन, नॉट जस्ट दैट, देयर इज अ जर्मन कनेक्शन, देयर इज अ जर्मन कनेक्शन, एंड एक स्पेशल काइंड ऑफ फील है सर्ज ग्नाब्री टुवर्ड्स टॉटनम। वी ऑल नो टॉटनम के साथ क्या बवाल मचाए थे जस्ट अ कपल सीजंस बैक। तो यार इट इज पॉसिबल। व्हाट इज द वैल्यू इनका? आर्ग्यूबली, अगर अभी तक हुआ नहीं है, टू अर्ली, आई नो मैं बड़ा स्टेटमेंट बोलने वाला हूं यहाँ पर, अगर हमें सर्ज ग्नाब्री मिलता है, trust me, it is basically a good business, better business from Chelsea than Barcelona getting Raphinha. I genuinely believe that. I genuinely believe that. हाँ, मुझे एक लेफ्ट फुटर चाहिए, लेकिन I'm saying if you are able to get Serge Gnabry, brilliant, brilliant होगा, absolutely brilliant होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्विकली मैं कमेंट ले लूंगा क्विकली। कुलीबाली पर आते हैं नेक्स्ट। एब्सोल्युटली भाई, we want August to come fast. Exactly, I really like the French goal. It was so perfectly judged. Yeah, fantastic chip that. ग्नाब्री टू रियल मैड्रिड है भाई। अरे शाम नहीं भाई, अभी चेंज हो रहा है मामला, थोड़ा चेंज हो रहा है मामला। लुक्स लाइक अगेन दे माइट कम, दे माइट हाईजैक का सीजन है। और यार भाई सब लोग लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर एक और मैं क्विकली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब लोग को, ये मैं बैनर डालने वाला हूँ तो सब लोग भूलिएगा मत। तो ये यहाँ पे एक फ्रेश बैनर डाला है, सब लोग गौर से देखिए, ये फ्रेश बैनर को पढ़िए और अपने अभी कैलेंडर मार्क कर दीजिए। कल रात को, दैट इज वेडनेसडे रात को 11 PM IST, which is around 6:30 PM UK time, everyone watching, do not forget, please do not forget, because we have a very special guest coming on. Yes, we have a very special guest coming on tomorrow, Wednesday, 11 PM IST. I hope you guys don't disappoint me and you guys definitely back me. And not only that, you will enjoy the stream as well. और ये एक बवाल स्ट्रीम होने वाला है, नॉट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रीम, इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट स्ट्रीम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्क योर कैलेंडर्स, 11 बजे कल वेडनेसडे रात को इंडिया टाइम, दैट इज 6:30 PM यूके टाइम। प्लीज प्लीज मार्क इट, आई विल कीप इट ऑन, क्योंकि आप लोग फॉरगेट कर दोगे, लेकिन डू नॉट फॉरगेट प्लीज, इट मींस मी अ लॉट, राइट? लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द कमेंट्स यहाँ, बिफोर आई गो टू कुलीबाली, 72 मिलियन फॉर रफीनिया, हंस रहे हैं अगेन। फॉर मी फैंटास्टिक प्लेयर, मैंने इनके बारे में ट्वीट भी किया है, मैंने काफी कमेंट्स आए थे कल के वीडियो में, मैंने रिप्लाई भी किया था कि यार भाई प्लेयर बुरा नहीं है, रफीनिया इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, आई एम नॉट बीइंग सॉल्टी, एब्सोल्युटली। लेकिन द फैक्ट इज, विल ही एक्चुअली प्ले एवरी गेम फॉर बार्सिलोना? आई क्वेश्चन दैट। और प्लेइंग 72 मिलियन विद एड ऑन्स, आई क्वेश्चन दैट एज वेल। सो दैट इज द होल पॉइंट मेरा। लेकिन हाँ, मार्केट अगर दैट इज द वैल्यू, सो बी इट, सो बी इट। एंड लेकिन अगर हमें सर्ज ग्नाब्री मिल गया, देन आई थिंक दे विल बी थिंकिंग ट्वाइस एज वेल। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। या वेल, कोई नहीं यार, फुटबॉल क्लिक, डोंट वरी, एज वी विल विन, डेफिनेटली विल विन। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड दिस इज अ 2 to 3 प्लेयर ट्रांसफर विंडो फॉर चेल्सी। इंटरेस्टिंग भाई, दो तो ऑलरेडी हियर वी गो सून आ गया है, वन इज ऑलरेडी डन, राइट? दैट इज ऑफ कोर्स मिस्टर रहीम स्टर्लिंग, वो अनाउंस भी होने वाला है आज रात को, मेरे ख्याल से, या कल रात को मैक्सिमम। बट नेथन आकी भी होने वाला है, इनफैक्ट 41 मिलियन की बात हो रही है बेस, और टोटल 45 मिलियन की बात हो रही है, वो हो जाएगा मेरे ख्याल से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्ज ग्नाब्री अगर आता है, ब्रिलियंट। लेकिन कुलीबाली भी, यस, कुलीबाली का भी मैं यहाँ एक बार स्टॉप करता हूँ शेयर करने के, और मैं आई नो काफी लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं क्विकली ये भी शेयर करना पड़ेगा मुझे, तो कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, मैं देख रहा हूँ कुलीबाली का, एक सेकेंड, मैं किधर गया भाई? कुलीबाली का भी आया था, कुछ तो ट्वीट आया था। यस, कुलीबाली। तो कुलीबाली का अगेन ये कोई नया स्टोरी है नहीं, लेकिन अभी काफी रिलायबल सोर्स है, और मैं रिलायबल सोर्स ही दिखाता हूँ, जैसा आपको पता है। Khalidou Koulibaly, one more name in the list for Chelsea as they keep searching for 2 center backs, वो जो 3 center backs का हो गया है on June 29th. Now 3 घंटे पहले फेब्रिशियो ने भी कंफर्म किया है, और not just फेब्रिशियो, even Matlaw and everyone else said Koulibaly revealed as a name in Chelsea list in June is still one of the options. New meeting with his agent took place on Monday, so कल already हो गया एक meeting. Nathan Ake deal also in negotiation, while club feels Bayern are leading the race for Matthias De Ligt as the agreed personal term. So yes, डिलिक्ट दे अग्रीड पर्सनल टर्म, लेकिन वहां पर भी कुछ ट्विस्ट आ सकता है, इसीलिए आप देख रहे हो मेरे जो पोल में डिलिक्ट का भी मैंने डाला है, बिकॉज देयर माइट बी अ सिचुएशन कि यूवेंटस मे नॉट बी एबल टू गेट कालिडू कुलीबाली, क्योंकि दे वर आल्सो इंटरेस्टेड, एंड ब्रेमर इंटर जाए तो यूवेंटस के पास सेंटर हाफ कौन बचे भाई? तो मे बी यूवेंटस माइट जस्ट कीप नो मैटियास डे लिक्ट दिस ईयर,
और दे आर प्लेइंग वेरी हार्ड बॉल कि यार हमें 70 मिलियन यूरो से नहीं चलेगी बात, हमें चाहिए नॉर्थ ऑफ 85 मिलियन यूरोज, आइडियली 100 मिलियन यूरोज, वो है अपना डिलिक्ट का प्राइस। तो क्या लगता है भाई बायर्न म्यूनिख कर पाएगी डिलिक्ट को? लेकिन यार लग रहा है अभी कुलीबाली है, क्योंकि द फी दैट इज supposedly being spoken with Koulibaly and Chelsea is about 40 million euros. 40 million euros, I think is a 2 or 3 year deal. I think that's a very good deal. और let's be honest, आज के दिन में, या फ्यूचर का नहीं बोल रहा हूँ, आज के दिन में Koulibaly is a better center back than a De Ligt. That's a fact. He's a better center back than Ake for sure. He's a better center back than Koundé for sure. आज के दिन में, हाँ, definitely it's not a long term signing, लेकिन यार that's how we do it. Thiago Silva and Koulibaly can easily play 2 seasons. Thiago Silva can easily play 1 season. Why not? I think that's a very good kind of a deal. अब तो बारसा को फ्रेंकी बेचना ही पड़ेगा टू ब्रिंग इन कुंडे एंड लेवा। या बाय द वे लेवा का क्या हुआ है भाई? लेवा बेसिकली ही इज अग्रीड टर्म्स, ही इज डन अ मेडिकल, लेकिन भाई बार्सिलोना हैज नॉट रियली बज्ड मोर, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन वहां पर। बुमराह एंड शामू, ओके लेट्स सी, विल टॉक अबाउट दानिश डेफिनेटली भाई, आज रात को बात करेंगे क्रिकेट के बारे में बिकॉज दिस फुटबॉल स्टील, लेकिन बिग अप टू दानिश एंड कांग्रेचुलेशन दानिश फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड विन। एंड 75 मिलियन नहीं चाहिए भैया ये, अरे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, नंबर 26 सुप्रीमसी कमिंग बैक अंकित भैया, अरे बिल्कुल बिल्कुल। Serge Gnabry recently said though that he won't be accepting any rival team's offer in this case as he was Arsenal player, he won't be signing for Chelsea most probably. हाँ मतलब again उसने बोला था yes, but as per the reports, कल बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट्स आ रहे थे all of a sudden that I think Tuchel or one of the staff members has kind of spoken to Serge Gnabry and Robert Lewandowski, or things might have changed. So that is what has happened overnight, Dead Sky Gaming. So you never know because Bayern Munich, imagine how many games did Serge Gnabry start? Tell me realistically how many games? मुझे लगता है भाई hardly, मतलब every alternate game. I'll tell you why. Because yes, he can play false nine, वो एक उनका एडवांटेज है, अगर लेवेंडोस्की जाते तो he might be the false nine और साडियो माने, लेकिन साडियो माने एक नए प्लेयर है, यस नए प्लेयर, व्हाई वुड यू स्टार्ट, बट कम ऑन, ही लेफ्ट लिवरपूल एज अ लेजेंड, तो अगर वो छोड़ेंगे तो ही विल एक्सपेक्ट टू गेट अ लॉट ऑफ स्टार्टिंग गेम्स। Leroy Sané has a pace for me. Leroy Sané का basically ये season will be the breakthrough season in my opinion. तो Leroy Sané on the left, Leroy Sané on the right, Sadio Mane on the left, and बीच में basically एक striker हो, कौन रहेगा that you need to tell me कि कौन रहेगा Bayern Munich का striker, whether it will be Lewandowski himself क्योंकि he is back into training, or will it be Ronaldo or anyone else? Okay, so we have a new member. Okay, Derain has become a member again. Derain भाई साहब बढ़िया लगता है भाई, हमेशा you always support the channel. Of course, Derain खुश तो बहुत होंगे आप आज, because yes, 40 million euros Koulibaly is coming. Looks like अभी यार ज्यादा पलड़ा भारी है चेल्सी का, एंड ऑल ऑफ अ सडन कुंडे के टॉक्स इतने नहीं हो रहे, डिलिक्ट के टॉक्स इतने नहीं हो रहे, नेथन आकी और कुलीबाली लग रहे हैं, और नेथन आकी कुलीबाली इवन एज अ पेयरिंग मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ है, प्लस नेथन आकी के पास हेडर्स है, कुलीबाली के पास बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट लेफ्ट फुटर, एक राइट फुटर, यस कुलीबाली इज राइट फुटर पीपल, जस्ट सो एवरीवन नोज, आई नो ये पता नहीं फॉर सम रीजन लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ही इज लेफ्ट फुटेड, नहीं, ही इज राइट फुटेड, but he's comfortable with both feet, just like a Rudiger. So that's brilliant on him. He can play left center back and a 3 at the back as well. Liverpool wanted to humiliate us by using the reserve players to beat us, but they ended up subbing in all of the main players. No, I don't think so, Danish. ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। They just wanted to basically try out new things because यार Liverpool ने major signings कुछ की नहीं है, तो I think they were impressed with some of the youngsters. In fact, Mabaya जो उनका right back था, I was impressed in the first few minutes until he made that blunder for Sancho's goal. Yes, people, let's get to 50 likes, and actually let's get to more likes. In fact, certainly that's a lot. And again, do not forget भाई ये वाला like, subscribe, and don't forget join live 11 p.m. IST this Wednesday, that is tomorrow. So do not forget this. We have a special guest, a guest who does not come every day. So please, be there. Absolutely. Klopp said you cannot write off Arsenal for challenging the title. भाई इतना confidence तो हम लोग को, it's Jurgen Klopp, you know that the guy always praises. हम लोग सब FIFA में खेलते हैं ना, press conference है, would you like to praise the opposition or praise your own club? He is that guy who always praises the opposition. भाई हर एक player के लिए बोलता है, he is one of Matthias Nunes के लिए बोले भाई, Matthias Nunes के लिए बोलते हैं he is the best in the world. Imagine. Gnabry would be dope for Real Madrid, not gonna lie. Yeah, निशांत भाई अच्छा लगता है, आप आते हो तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, लेकिन काफी अच्छा लगता है with all your support and everyone else's as well. Well, Real Madrid के लिए he's going to be brilliant.
But is it not going to be really unfair on Rodrigo? Well, I know Real Madrid have they just go and sign. You know that. Well, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich have that pull. That's a fact. भाई लेकिन at the same time you know that Rodrigo is there, Valverde for bigger games is there. उन्होंने किया है भाई enough. I think they deserve their spot. They deserve their spot. और Gnabry अगर आ जाता तो ये big clear कि Gnabry will start. हाँ आप सेम चीज बोल सकते हो about Rudiger that because Rudiger is coming, Ferland Mendy will not start because of Alaba playing left back. हाँ वो भी बोल सकते हो. It's Real Madrid. लेकिन भाई वही है to manage such a big squad in two positions like that will be difficult in my opinion, despite it being Carlo. तो मुझे नहीं लगता गनाब्री जाने वाले. आई माइट बी रॉन्ग लेकिन मुझे लग रहा है भाई गनाब्री माइट जस्ट चेंज क्योंकि वो ही लिव्ड इन लंदन. यस ही डजंट वांट टू साइन फॉर अ राइवल बट Thomas Tuchel factor. Gnabry is German, remember, everyone. David Austin, Chelsea close to agreements on fee plus personal terms to sign. Kalidou Koulibaly not done and Napoli often tricky but talks moving forward. बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट. नापोली से बच के रहियो भाई, नापोली से बच कर रहियो. दे आर बेसिकली द स्पर्स ऑफ सीरिया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स. मैं बोल रहा हूँ बहुत ही डिफिकल्ट है डूइंग बिजनेस विद नापोली. गनाबी को सिटी होना चाहिए. अरे भाई सिटी अब बिग अप टू यू लेकिन भाई कितने चाहिए आपको अटैकर्स? अल्वारेज trust me, his chances will not come then अगर गनाबरी आते because you have Gnabry and Mahrez on the right hand side. Imagine. तो मुझे नहीं लगता कि ना अल्वारेज will get a lot of chances otherwise, right? I hear कि अल्वारेज का वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और फिल फोर्डन और बर्नार्डो सिल्वा और द अदर्स जैक ग्रिलिश ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में खेलेंगे. तो आई थिंक एज इट इज आपके पास है. और केविन डी ब्रुयने भी है. लाइक 6 पीपल हु कैन ऑलरेडी प्ले देयर. सो व्हाई डू यू नीड दिस? ऑफ कोर्स हालैंड भी साइन किया है आप लोग ने ना. तो यू हैव अटैक पोजीशंस में 3 पोजीशंस के लिए 7 पोजीशंस 7 प्लेयर्स ऑलरेडी. आई डोंट थिंक वी नीड. हाँ मिडफील्डर आप बोल सकते हो समवन ऑफ अ मिडफील्ड कैपेसिटी आ सकता है अगर गुंडोगन लीव्स बट नॉट येट इन माय ओपिनियन. Why do you think there is more presence of inverted winger than more of the other wingers in each team? Well, it's modern football. I think I'll tell you why. मेरा ये है कि यार इट्स बिकॉज ऑफ द फुल बैक्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ द विंग बैक्स और फुल बैक्स. आप देखो मॉडर्न फुटबॉल में अगेन पीपल अगर थोड़ा सा लैग हो रहा है ना थोड़ा सा बेयर करें ना. आई थिंक इंटरनेट इज अप एंड डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स होपफुली एंड इट विल बी बैक बट लेट मी नो इफ इट्स टू बैड. सो देखो modern fullbacks is like you have basically a Trent in Liverpool. ठीक है, you have a Reece James in Chelsea. You have basically name any team. Yeah, name any team. They have a modern fullback who's kind of overlapping much more. So to kind of compensate for that, you have to have inverted winger who's able to kind of fill the space and get the space. But at the same time, attacking wise में भी देखो ना. Attacking wise में basically inverted winger will be able to basically be more direct in terms of direct to goal. तो वहां पर है एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली. सो दैट अगर हाँ हमारे फुल बैक्स विल बी रियली फ्लैट फुल बैक्स. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर एस्पिलिक्वेटा कल के दिन अगर प्लेस फॉर बार्सिलोना इन राइट बैक पोजीशन. ओके यहाँ पर अरे बहुत ही इंटरनेट कम हो गया था एक सेकंड के लिए. चलो कोई नहीं. लेट मी नो पीपल इंटरनेट बहुत ही खराब है. आई होप इट्स जस्ट अबाउट फाइन. कोई नहीं कभी कभी होता है वेदर से चलते हुए. लेकिन हाँ अगर एस्पिलिक्वेटा है तो यू नीड बेसिकली समवन लाइक अ डेम्बेले, समवन लाइक अ रफीनिया हु एक्चुअली डज द जॉब फॉर यू, राइट? सो दैट इज द रीजन मैं बोलूंगा. लेकिन अगेन यार जो भी आया भाई भूलिएगा मत कल रात को 11 बजे वी हैव टू बी लाइव एज वेल. And again, give me feedback on the quality of the video. If someone can just confirm me on the chat, क्योंकि मुझे लग रहा है हाँ अभी नॉर्मल हो गया लग रहा है. कोई नहीं. तो yeah, I hope that I was able to answer that question. That's Sky Gaming. I hope so. I know कुलदीप भाई आ रहे हैं ना. अरे नहीं यार कुलदीप भाई नहीं आ रहे, इतना बोल देता हूँ. लेकिन कुलदीप भाई से तो कल ही बात हुई थी. रोज होती है यार बात कुलदीप भाई से. कुलदीप भाई बहुत ही रिस्पेक्टेड डाउन टू अर्थ पर्सन है एब्सोल्युटली. और इनफैक्ट हम बात ही कर रहे थे अबाउट Barcelona and Chelsea transfers. So we are like betting यार कौन आएगा. betting as in friendly bet without money. just ऐसे यार कौन आएगा. तो बेसिकली कुलदीप भाई जहां तक मुझे मालूम है ही इज लाइक नहीं लेवेंडोव्स्की लग रहा है कि यार ही माइट बारसा नहीं आएगा और वो चेल्सी आ जाएगा. उनको लग रहा है कि यार क्योंकि थॉमस टुकल फैक्टर है. अगर थॉमस टुकल लास्ट में बात करके ला देते हैं और चेल्सी इज एबल टू पे, हु नोज लेवेंडोव्स्की कैन कम टू चेल्सी एज वेल. हाँ लेकिन मुझे लग रहा है नहीं ही स्टिल गो टू बार्सिलोना. लेकिन कुलीबाली लग रहा है हाँ चेल्सी आएगा डेफिनेटली भाई लग रहा है. और कुंडे का तो इंटरेस्टिंग रहेगा.
आई डोंट थिंक यार, अगर फ्रेंकी डियोंग को रीड नहीं करती ना बार्सिलोना टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो लग रहा है एज पर फेब्रिशियो's लेटेस्ट वीडियो भी लग रहा है यार, फी अग्रीड है 85 मिलियन यूरोस फ्रेंकी डियोंग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में। इट इज जस्ट दैट 20 मिलियन यूरोस का जो एड ऑन्स इंक्लूडेड है ना उसमें, वो डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो आई थिंक अगर फ्रेंकी को देते हैं देन दे कैन बाय कुंडे, अदरवाइज कुंडे का भी डिफिकल्ट है भाई। कुंडे he might just stick on Sevilla then in worst case, right? Just like De Ligt in Juventus. Asensio to United, okay. Interesting. Asensio to United will be very interesting, in my opinion. Matlab, आज if you see the way that they played, in fact, I think that right-footed winger in a Sancho on the right-hand side kind of worked for me. They need a super sub as well. Lekin I don't know, anyone knows about what happened to Mason Greenwood's case? मतलब वहाँ पर latest क्या है? मतलब in my opinion, it'll be kind of असेंसियो अगर आ जाता है he won't be a starter anyway. He won't be a starter. मुझे नहीं लगता स्टार्टर होंगे। हाँ, अगर एंटनी आते हैं बिकॉज वो एरिक टेन हाग के साथ खेले हुए, आई फील दैट वो स्टार्टर आएंगे। लेकिन यार टॉकिंग अबाउट एंटनी एंड यूनाइटेड, वेल लुक्स लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज इज गॉटन एवर सो क्लोजर। ठीक है, फर्बिशो ने भी कंफर्म किया अपने वीडियो में, तो लिसांड्रो मार्टिनेज तो लग रहा है कि आने वाले हैं डेफिनेटली टू यूनाइटेड। वो फी अराउंड द 50 मिलियन यूरोज मार्क है, बट एंटनी के लिए क्या वो पे कर पाएंगे अराउंड 70 मिलियन यूरोज? आई थिंक दे आर अराउंड 20-25 मिलियन यूरोज शॉर्ट। तो एंटनी का थोड़ा सा अभी डाउट है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई इट बी मोर एंटनी टू यूनाइटेड देन असेंसियो टू यूनाइटेड बिकॉज ऑफ एरिक टेन हाग रिलेशन विद अयाक्स। आई डोंट फॉलो सीरिया बट लियाओ रूमर्स, यस इस पर भी आएंगे भाई। तो ये क्यों आ रहा है भाई, पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। ये भाई अपने मैटलॉ बोले, तो मैटलॉ ने बोला था कल, इनफैक्ट यस्टरडे मिडनाइट इटसेल्फ इट हैड कम। ठीक है, तो मैटलॉ के थोड़े से ट्वीट दिखा देंगे अभी। ठीक है, लेट्स लुक एट मैटलॉ's tweet because yes, there was a lot of stories around this, absolutely। लेकिन हाँ, मैटलॉ बोले थे यार, it is just not basically Serge Gnabry, it is basically we are even talking to, or in fact if I'm not wrong Nizar Kansela ने भी confirm किया था, we are also interested in Raphael, or anyone remembers we had met George Mendes a few days back where not only Cristiano Ronaldo but also Raphael Leao was spoken about। ठीक है, is he available? हाँ, वो 100 मिलियन का प्राइस टैग से आ रहे हैं। Maybe can he be a Jack Grealish or more than that in fact easily for us? I don't think so। सच में बोलता हूँ, yes Raphael Leao is fantastic, don't get me wrong, fantastic। ठीक है, he मतलब एक लुइस डियाज फैक्टर जो लाए ना लिवरपूल के लिए, वो फैक्टर लाएंगे फॉर चेल्सी अगर आते हैं। लेकिन मैं रियलिस्टिक पिक्चर बोल रहा हूँ, मिलान के लिए आज के दिन में राफेल लियाओ को रखना बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज्यादा ही क्रूशियल है। ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग अ न्यू ओनरशिप एंड फॉर मी एज वेल राफेल लियाओ इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन यूरोप। और अगर मिलान को अगेन दे डोंट वांट टू गो बैक, दे नीड टू कीप। आई एम नॉट सेइंग एज मिलान सपोर्टर, ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी न्यूट्रल यहाँ पर। आई होप दैट राफेल लियाओ, ऑब्वियसली माय लव फॉर चेल्सी इज फार मोर, तो आई होप दैट ही कम्स टू चेल्सी, लेकिन मुझे नहीं लगता आएगा। he'll stay on with Milan is what I am calling Derin। अगर आए तो बवाल मच जाएगा, because who knows, सच में अगर टॉड बोली इंटरेस्टेड थे नेमार, और नेमार maybe Tuchel is not so interested as per reports, and even Ronaldo, maybe Rafael Leao is the next big thing in that kind of position, right? Because Sterling आ रहे हैं तो Rafael Leao भी आएंगे, एक और अटैकर तो डेफिनेटली आएगा डेरिन, it might be Rafael Leao शायद, लेकिन मेरे को लग रहा है सच Gnabry in my opinion, the way I have kind of called it, right? अरे शायद in the house, शायद बिग अप भाई, कैसे हो? और यस, लिवरपूल फैन से आया भाई सुपर चैट और लूजिंग, सो यार रेस्पेक्ट टू शायद एवरीवन, शायद ओपी हो जाए, एंड यस दैट मींस अ लॉट। लाइक आई ऑलवेज से, जो भी आता है सुपर चैट, जो भी मेंबरशिप आती है, एवरीथिंग काइंड ऑफ वुड गो बैक as soon as I kind of get it, I will invest back into the channel absolutely, and yes thank you a lot। Hustler CN Premier League 4-0 will be settled in Old Trafford। well अभी यार इतना बता सकते हैं कि ना टोटल लास्ट 3 मैचेस में 5-0 हो गया 9-0 से। शायद अभी भी आप लीड में हो, लेकिन आई नो यार प्री सीजन था, वो भी सच्चाई है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेल अभिषेक, इंटरेस्टिंग एंड ओके, losing United is beneficial for most of people, but winning United will be good for business of hospitals। I don't think most are able to tolerate a win। अरे भाई साहब, chill guys, chill, मजाक में बैंटर चलता है, चलो। Oh no नहीं यार, come on। मतलब I know being a Liverpool fan as well, काफी है, मतलब मैं let's see what is the reaction। Bayern Munich going for Joao Felix, 80 million plus Pavard was offered to Atletico Madrid but they rejected। Okay, talking about Pavard, okay, not just Upamecano, जब डिलिक्ट लिंक हो रहे थे बायर्न म्यूनिख से, जो अभी भी है वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिकॉज ऑफ अग्रीइंग टर्म्स विद हिम एटलीस्ट, भाई पवार्ड और उपमेकानो दोनों ही लिंक हो रहे थे चेल्सी के साथ, क्योंकि यार क्यों, चेल्सी प्ले 3 इन द बैक, तो पवार्ड
कैन बी अ राइट सेंटर बैक इज वेल। लेकिन वही है ना, हमें रिजेक्ट नहीं चाहिए, स्पेशली जब आप उपमेकैनो ले रहे हो, जो हमारा प्रेफरेंस है। सेम चीज फुटबॉल की आपके मैन सिटी के साथ होने वाला है। ग्वार्डियोला आप लोग ले लोगे और हम लोग मिस कर जाएंगे, हम लोग ले रहे हैं आकी। लुक एट दैट। ओके, डिवाइन म्यूजिक स्कूल मुंबई, hello bhai, I hope you have liked the stream. Do not forget. And then no problem. Red Sky Gaming always bhai, always. Asensio is inconsistent. Serge bol rahe hain. He's good at range though. Got a strong left foot and has scored some great goals this season. He's always having a good goal. He's like almost a Ziyech. Ziyech बोलते हैं ना, मतलब कभी कभार वाओ फैक्टर लगता है, कभी कभार where is he is missing. He's literally like a Ziyech in my opinion in terms of जो output आता है उनसे. What about Timo Werner's future? He's good at making attacks and help and build up, but did we buy him for that? His main strength was finishing in RB Leipzig. He scored very rarely for Chelsea. Absolutely, Red Sky Gaming. मैंने तो बता दिया है, Timo Werner, as much as I love his intent on the pitch, much as I love his runs on the pitch, I love his energy, everything I love except for his footballing ability. मुझे नहीं अच्छा लगता. I don't think he can be a long-term striker for Chelsea. Period. So it's better to get rid of him. इसीलिए maybe Todd Boehly and Tuchel agree. And that's Tuchel is frustrated to the core looking at Timo Werner play. आप देख सकते हो पिच पर, just like he's with Jorginho and Alonso with the last 12 months. तो लग रहा है भाई Tuchel भी frustrated हो गए. He is still giving time to Pulisic because Pulisic is fairly young. Timo Werner is almost 25? Correct me if I'm wrong. तो मुझे लगता है this is like he's entering into his peak and वो finish नहीं कर पा रहे because of footballing ability नहीं. और by the way क्रिकेट फैंस के लिए भाई, इंडिया जीत गई है, 20 ओवर मैच बना दिया 50 ओवर मैच को इंडिया ने और जीत गई है. बट वील टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर व्हेन वी स्ट्रीम लेटर टुनाइट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, which will be hopefully around 11:30 बजे. Angela, when will Sterling be announced? Darren, आज second part of the medicals as per the reports हो रहे हैं, तो it will be announced like generally Chelsea के announcement कब होते हैं? शाम को होते हैं, शाम के वक्त UK time, which is about 6:30 PM, ठीक है, which is about हमारा 10-11-12 बजे, 10 से 12 बजे रात को होंगे. तो होपफुली आज हो जाए. अगर मैं प्रीटी श्योर वो लोग ने तैयार रखा होगा एक एक अनाउंसमेंट वीडियो, तो आज हो सकता है. लेकिन मैं तो चाहता हूँ कल हो, क्योंकि वाई, बिकॉज कल वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल गेस्ट इनटू द चैनल. होपफुली यू ऑल विल कम और स्टर्लिंग अनाउंस हो जाए कल तो बढ़िया हो मेरे ख्याल से. लेकिन हाँ, कुलीबाली आएगा तो चेल्सी बैक 3 खेलेगी कि बैक 4? That is the brilliant question, Rocky. मैं बोलता हूँ that is what the plus point है कुलीबाली के आने से. कुलीबाली, जैसे मैंने बोला, he is a right footer who is also comfortable on his left foot. तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली. He can play left center back, he can play center back in a back 3, क्योंकि वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी रखते हैं और ऑब्वियसली उनका स्ट्रेंथ और बॉडी का जो इल्क है आप जानते ही हो. तो दैट मेक्स हिम पॉसिबल बैक 4 एंड बैक 5 कैंडिडेट. और वो लीडर भी है. Koulibaly is a no-brainer. Koulibaly, he is a national teammate of Mendy. प्रॉब्लम वाज इतने दिनों से कि यार Koulibaly की क्या बोल रहे थे, जस्ट लाइक अ रफीनिया, जस्ट लाइक अ लेवेंडोव्स्की, कि भाई वो बारसा जाना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम थी. और बारसा को शायद चाहिए एक यंगिश सेंटर बैक एज पर द रिपोर्ट्स. वो मैं अग्री नहीं करता क्यों जा रहे, बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव लाइक 3 यंगिश सेंटर बैक्स, अराहो, क्रिस्टियनसन और एरिक गार्सिया, 3 यंग सेंटर बैक्स ऑलरेडी उनके पास. तो आई एम काइंड ऑफ वेरी सरप्राइज्ड विद दैट. लेकिन उनको चाहिए यंगेस्ट सेंटर बैक और उनको चाहिए फॉर द फ्यूचर कुंडे जो राइट बैक भी खेल पाए. दैट आई कैन अंडरस्टैंड. तो दैट इज व्हाई Koulibaly इज अवेलेबल. सेकेंडली, हाँ, अनलाइक राफिनिया एंड लेवेंडोव्स्की ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं बारसा ही जाना चाहता हूँ, वो नहीं बोल रहे, राइट. और प्रॉब्लम ये थी कि वी हैड वेरी वेरी बैड कॉन्वर्सेशंस विद नापोली एक्सेप्ट फॉर जॉर्जिनियो ट्रांसफर और मे बी हिग्वाइन लोन ट्रांसफर. हमें कभी भी प्लस नहीं मिला है एडवांटेज. हमें याद है यार, ड्रीस मर्टेंस के लिए हम इतने स्ट्रांगली लिंक थे. ड्रीस मर्टेंस नहीं आने दिए. ड्रीस मर्टेंस को नहीं आने दिए. वो 31 years of age at that time, फिर भी नहीं आने दिया नापोली ने. एंड देन ऑब्वियसली Koulibaly himself. तो काफी बार हुआ है भाई नापोली के साथ. वी हैव नॉट काइंड ऑफ हैड अ गुड डील. तो होपफुली चेल्सी वर जस्ट हेजिटेटिंग फॉर दैट मैटर. और अभी यार द फैक्ट दैट De Ligt अग्री कर दिया टर्म्स, पर्सनल टर्म्स विद बायर्न म्यूनिख डिस्पाइट Bayern Munich not being able to pay the entire 75 or rather 85 million euros fee. I think Chelsea ने realize कर दिया कि यार we need one experienced center half for sure. हाँ, De Ligt wasn't so experienced as well, लेकिन भाई being so young also वो काफी experienced है. तो I think Koulibaly makes total sense for me अगर आए तो. Hopefully कोई hijack नहीं करे डील को, बस उतना बोल रहा हूँ. Not winning a single trophy for last 5 years. This 4-0 win is nothing less than UCL trophy, bigger than the golden
Premier League, average Man United fan. Oh, proper pun यहाँ पर अभिषेक अंकित भैया Chelsea versus Milan UCL final. Who will you support? Nation wants to know. Chelsea, 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 Chelsea till I die. No two ways about it, भाई. मिलान का मैं स्टोरी बताया था ना. द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया में मे बी बिफोर 2000 इतना प्रीमियर लीग नहीं था. तो उस समय होता था व्हाट, सेरिया, ला लीगा. क्योंकि मेरा पिक था सेरिया, तो उसमें मिलान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक द जर्सी. आई स्टार्ट फॉलोइंग देम, आई स्टार्ट लाइकिंग देयर प्लेयर्स. देयर वाज अ डच कोर उनके टीम में, जो डच नेशनल टीम मुझे अच्छी लगती थी ऑलरेडी. तो दैट इज व्हाई आई फॉलोड मिलान. एंड देन केम काका 2002 वर्ल्ड कप के बाद. Then Shevchenko already was there, right? So those are players जो really kind of told me yes भाई ये एक टीम है. और मैं फीफा में हमेशा खेलता था मिलान के साथ भी. Chelsea was much more than it. Let's be honest. Chelsea is like literally after 2002 के बाद मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं एक शायद ही मिनट मिस किया होगा चेल्सी का लाइव मैच. मैं सच में बोल रहा हूँ एकदम. ठीक है. या तो साथ साथ में देखता हूँ कोई ना कोई मैच, लेकिन चेल्सी का ऑन हमेशा रहता है, कोई भी जुगाड़ करके. Bring on Chelsea, yes, yes, Chelsea, yes, definitely. Anyway, what do you think about Bowen to CFC in place of Raphinha? Yash, Bowen बहुत ही, I think briefly हमारे साथ लिंक हुए थे. I think he was more linked to Arsenal, क्योंकि Arsenal बोल रहे थे यार अगर हम Raphinha नहीं ला पाएंगे, maybe Jared Bowen is a very good choice. Yeah, maybe आप बोल सकते हो, but at the same time यार, I don't think Bowen will come for cheap. Remember, and people, I don't know, Man City fans, आप बोलिए, डेविड मोइस ने बोला है कि वी बिड मोर देन मैन सिटी डिड फॉर कैल्विन फिलिप्स. इमेजिन. तो कैल्विन फिलिप्स वांटेड टू प्ले फॉर पेप ग्वार्डियोला. तो वही हो सकता है ना, मे बी जेरार्ड बोवन वांट्स टू प्ले फॉर डेविड मोइस. जस्ट सेइंग. लेकिन हाँ, जोक्स असाइड यश, आई थिंक लेफ्ट फुटेड हमें चाहिए एक. मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई, हमें जिएक को रखना चाहिए. आई नो खुश नहीं है, बट आई थिंक काफी बार हुआ यार. बर्नार्डो सिल्वा वांटेड टू लीव इन गो टू बार्सिलोना, बट डिडंट ही स्टे एट मैन सिटी एंड डिड लाइक मैडनेस. So there are people out there who prove कि who stick around, who be professionals. Maybe Lewandowski might change his mind and stay at Bayern क्योंकि आज ट्रेनिंग में थे. Unlike certain other people जो नहीं turn up होते. तो I think again I'm not referring to anyone, generally बोल रहा हूँ. लेकिन a fact is that left footer नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है. In my opinion, yes, I hear your point absolutely. लेकिन भाई Gnabry और Jared Bowen में से आप चूज करने बोलो ना आज के दिन में, मैं Gnabry के साथ जाऊंगा. क्यों? क्योंकि Gnabry is someone who can play the false nine as well. Or Gnabry is more proven at the very highest level, at the very top level, or he knows London as well. तो यार काफी प्लस पॉइंट है. He has unfinished business, जो चेल्सी की स्टोरी रहती है हमेशा, to come back to the Premier League and prove that यार क्या मिस की थी Arsenal. So there are, I would still go with Gnabry over Jared Bowen. That's my choice. आप लोग चैट में बोलिए, who should Chelsea go for? Should we go for Gnabry? Maybe, और वो भी at that level of player अच्छे कॉस्ट में आने वाले हैं. एंड Raphael लिया 100 मिलियन देकर चेल्सी को लाना चाहिए. Raphael लिया और मे बी नेमार और जारेड बोवन. लेट मी नो इन द चैट. भाई आज जल्दी स्टार्ट करो करियर मोड सो दैट स्ट्रीम भी सही टाइम पे खत्म हो. यार पता नहीं यार, जल्दी तो मुश्किल लग रही है लेकिन स्टार्ट तो वही समय होगा. दैट इज, एंड Syed here for everyone out there is talking about FIFA 22. Yes, we have got FIFA 2022, so we are going to play that, continue that on Almighty Sports Plus, and hopefully within couple of hours from now हम शुरू करेंगे. Absolutely. Aki Silva Koulibaly, how's his back line? Looks tasty, yeah. Rocky looks good. In my opinion, looks good. Overall, I think it's kind of similar. आप देखो, think about it. Azpilicueta, Silva, Rudiger, Aki Silva Koulibaly. I don't think it's too much of a difference. Rudiger far better than Aki. लेकिन Koulibaly आज के दिन में far better than Azpilicueta on the right center back. So yes, that's a brilliant center back partnership. But again, मेरा opinion ये है कि 4 at the back जाएंगे. I think थोड़ा ज़्यादा try करेंगे. He wants to go 4-1-4-1. I've been hearing. Let's see. I might be wrong. शुरू maybe he might not do that, लेकिन eventually they will. Ankit, the Koulibaly of 2-3 years ago isn't the same as of now. Oh yeah, 100%. I'm not saying that he's the best in the world, Manu. Don't get me wrong. But what I mean is, like, Koulibaly is better than most that are available in the market. He has less mistakes. He has less mistakes than who? He has less mistakes than a De Ligt. Yes, that's a fact. अगर आप देखते हो Serie A, week in week out, you'll understand what I'm talking about. Koulibaly versus De Ligt. Then Nathan Ake as well. मैं तो बोलता हूँ he's far better. He's far better than Nathan Ake in all aspects. Jules Koundé, yes, he is brilliant. He has a beautiful way of playing football. भाई लेकिन he is a bit too short for the Premier League in my opinion, despite उनका जो leap है. So we cannot have a Ake and a Koundé, two short people playing. I know वो साथ में नहीं खेलने वाले, but at some point they will. So we cannot have that.
So maybe Koulibaly is a better deal altogether. आप देखो मतलब तो was available center half. Skriniar में भी आप बोलोगे, हाँ Skriniar आज के दिन में मे बी टक्कर दे Koulibaly को, डेफिनेटली मैं अग्री करूंगा. अरे नो प्रॉब्लम, मानव मानव बिग अप भाई ऑलवेज सपोर्टिंग द चैनल एंड ऑफ कोर्स ही इज अ मेंबर एज वेल, सो शाउट आउट बनता है मानव को. एंड यस मानव, आपके लिए भी और सबके लिए भाई, ये कल वाला स्ट्रीम प्लीज आप अभी मार्क कर दिए सब लोग, रिमाइंडर कर दो, अलार्म सेट कर लो अपने अपने मोबाइल फोन में. मैंने पेज सेटअप करना है, लेकिन भाई 11 बजे कल रात को, ये तो ऑलमोस्ट रोज ही होता है 11 बजे रात को, वन ऑफ द टू चैनल्स, लेकिन कल रात को स्पेशली क्योंकि वी आर गेटिंग अ गेस्ट होपफुली यू नो हु इज नॉट कम टू एनी ऑफ आवर चैनल्स, सो लुक एट दैट. लेकिन हाँ, addition of Koulibaly in Chelsea will be no tension because he is a chameleon. Oh, he just dresses himself in those colors which is required for the team. A perfect team player. What a way of putting it. Dead Sky Gaming, brilliant. और भाई सब लोग जो देख रहे हैं भाई लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को. लाइक्स काफी कम हो रहे हैं आजकल. जस्ट नो कंप्लेंट बट जस्ट रिक्वेस्ट. आई होप यू नो यू अग्री एज वेल दैट एल्गोरिथम हेल्प्स यू नो विद द लाइक्स. तो लाइक्स कर दीजिए डेफिनेटली, और शेयर कर दो तो और भी बढ़िया, और भी लोग आएंगे तो मजा आएगा, बिकॉज वी हैव टू स्पीक लिटिल बिट ऑफ बारसा एंड अदर clubs as well. Nothing against anyone, but United at least deserve a little bit of appreciation after today's game from rival fans. Danish, am I not a rival? Am I not a rival? आप देखिए मैं कितना बड़े किया हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ठीक है. हाँ डेफिनेटली लॉट ऑफ अदर फैंस हैव आल्सो डन इट. डेफिनेटली इट इज ओवर प्रोपोर्शन सेलिब्रेशन, आई एग्री, वो भी मैं एग्री करता हूँ फ्रॉम ऑपोजिशन फैंस. बट आई थिंक द फैक्ट की आई कैन फील इट, आई कैन रिलेट इट. मतलब जो फुटबॉल देखने को मिली ना, दैट इज फार फार मोर प्लीजिंग टू द आई देन वो जो आप देख रहे हो लास्ट एक साल से. तो वो चीज मैं तो डेफिनेटली देता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग को. और हाँ, न्यू मैनेजर सिंड्रोम है तो सो बी इट, आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए आज, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो इट्स अ बिट ऑफ बोथ, लेकिन मिला है भाई, आपको मिला है डेफिनेटली अप्रिसिएशन, आई होप एटलीस्ट फॉर मी. एंड यस मानव याद दिलाते हुए यहाँ पर भाई खाली 58 लाइक्स. come on man, come on. Let's share, let's like the stream, and again not forget this thing what I've put here. Okay, यहाँ पर CFC Blues और मैटलॉ का शेयर करते हुए, Raheem Sterling is flying out to Los Angeles today to join his new Chelsea teammates and preseason training. Matt Law has said, so that means announcement is going to happen any moment. मैं Chelsea का साइट ओपन करके रखता हूँ तो looks like Chelsea की हो जाएगी announcement in next 1 hour. Within the next 1 hour हो जाएगा मुझे लग रहा है अनाउंसमेंट भी. बट हाँ सब लोग भाई देख लो, मैंने रहीम स्टर्लिंग का अनाउंसमेंट वीडियो भी कर लिया ऑलरेडी वीडियो, तो आप देख लीजिए. यार वीगो में क्या कर दिया. थैंक यू CFC Blues as always. Could Chelsea go for Di Maria when he was being targeted by big clubs but that was not serious? What could be the reason? हाँ तो डेड स्काई गेमिंग, आई थिंक चेल्सी का if I remember right, they are the transfer strategy क्या थी? First of all, the players should be available on cheap. अच्छा उस समय when Di Maria was available, they were in talks with Dembele all the time, ठीक है. तो Dembele और Raphinha का एक्सेप्ट हो गया था. हाँ, in my opinion Di Maria wouldn't have been bad, लेकिन एक होता है ना, they wanted one Premier League proven forward and one who's a star generally speaking, right, who may be from Premier League or not. तो Raphinha आपका Premier League proven था और बेसिकली Dembele जो आप उससे बात कर रहे थे, और Sterling तो था ही in the forward line. So I think we had already two players who had proven better in the Premier League recently. Di Maria has not proven the Premier League. Of course, people will say he might be a flop as well. लेकिन I don't agree. Di Maria, I think मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा criticized था than what he deserved. Yes, his attitude wasn't the best, but I think footballing ability-wise, it was not as bad as what he was made out to be. Well, I remember the match against Chelsea only. I think he created a goal. Was it in the last few minutes? So I remember that very well. लेकिन हाँ, so I think Di Maria would have been a good signing for a stopgap solution. वो एक long term signing नहीं होती. It would have been a backup plan at best, despite it being on free. Because we are also building for the future. साथ साथ में याद रखो. So it's a bit of both. But हाँ, वो चेल्सी को ऑलमोस्ट शॉक लगा ना कि डेम्बेले और रफीना दोनों ही मना कर दिए, एंड देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और तब तक डी मरिया ज्वाइन कर लिए. तो यू नो हाइंडसाइट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट कोई नहीं. गट फीलिंग आकी विल स्टे एट सिटी डिस्पाइट चेल्सी आर सो क्लोज. ओह माय गॉड, फुटबॉल क्रीक्स. या अगर ग्वार्डियोल मना कर दिया तो हो सकता है चेंज. ग्वार्डियोल मना कर रहा है अभी तक तो हू नोज. बट या आई स्टिल फील भाई हो जाएगा. मतलब यू नो पर्सनल टर्म अग्री होने के बाद कुंडे ही एक नहीं है, बल आ जाएगा. इतना भी बुरा नहीं हो सकता चेल्सी का, स्पेशली हिम बीइंग अ चेल्सी बॉय एज वेल. Big up to talk MU bro, long time no see. Congratulations for the win, of course. Yes, it was just pre-season, but at the end of the day, I'm pretty sure you were happy with the kind of football you saw. You were happy with Sancho's form, in my opinion, particularly. And of course, Fred not looking too bad. He's looking at the Fred of Brazil.
So if they can continue, be it great. But if not, also I think it's a work in progress. And talk MU, let me know, bro. What do you think about Lisandro Martinez coming to Manchester United, Christian Eriksen coming to Manchester United, and so on and so forth? The fact that Ronaldo is going to stay looks like it. So how does that feel? But big up always. And yes, people, जो भी नहीं जानते भाई, प्लीज चेक आउट मैन यूनाइटेड एजेंडा भी बहुत अच्छा चैनल है, वहां पर टॉक एमी आल्सो कम्स. बट ही इज आल्सो हैविंग अ चैनल ऑफ हिज ओन दैट्स कॉल्ड फुटबॉल वर्सेस कैंसर. ठीक है, दैट्स अ फाइट अगेंस्ट कैंसर विया फुटबॉल. इट इज ऑलवेज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज गो एंड गिव हिम अ सब, मींस अ लॉट टू अस. And yes, don't forget to sub to us as well in case आप subscribe नहीं हो. I was checking the stats, people. Come on, around 55% of people जो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं है भाई. सच में मतलब पैसे नहीं लगते भाई. मैं मेरे चैनल का नहीं बोल रहा हूँ, सब चैनल्स का बोल रहा हूँ. मैं 250 चैनल्स पर सब्सक्राइब हूँ. ठीक है, इट डजंट कॉस्ट मी $1. ठीक है, आप लाइक भी करिए, डजंट कॉस्ट यू. तो प्लीज प्लीज करिए यार, सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है. बट अगेन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन एज ऑलवेज. एंड डू नॉट फॉरगेट दिस, बार बार बोल रहा हूँ, ये तो मत भूलना, ग्नाब्री एंड कुलिबाली बहुत बढ़िया होगा. वेल, दोनों तो पूरा मतलब वाव वाव वाला विंडो. स्टर्लिंग, ग्नाब्री, कुलिबाली, नेथन आकी, भाई साहब तोड़ दिया विंडो. लेकिन मुझे नहीं लगता दोनों आने वाले. हाँ, थोड़ा पैसों की बात भी बोल सकते हैं आप. सेम टाइम चेल्सी को चाहिए 2 सेंटर बैक्स. तो आई थिंक अभी भी मैं बोलूंगा कि यार लेट्स सी. दोनों तो बहुत ही आइडियल केस है. ग्नाब्री का अभी भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कुलिबाली तो लग रहा है होने वाला है एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, मैं तो प्रेडिक्ट तो यही किया भाई कि यार ग्नाब्री भी आ सकता है. अगर अगर जाएगा ना कहीं तो चेल्सी जाएगा, मैं मुझे ये लग रहा है. दैट्स व्हाट आई एम कॉलिंग राइट नाउ, अनलेस रियल मैड्रिड वांट टू ब्रेक इट इन द लास्ट मोमेंट एंड हाईजैक, जो हमारे हो रहा है विद ऑल द बिग क्लब्स. Bigger clubs, not big clubs. We are also big club, absolutely. Okay, Luis Sinistra will be a hidden gem for the season FPL. My pick this is interesting. यार FPL भाई, again हम लोग बनाएंगे FPL लीग. काफी इंटरेस्टिंग होता है because it's all about appearing and starting the 11 also, right? तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है. मैं कोई प्री सीजन मैच को हाइप नहीं, चेल्सी और आर्सेनल. या दैट्स अ फेयर पॉइंट, दैट्स अ एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट. लेकिन वो ये फुटबॉल इज बैक टू एक्साइटमेंट तो आती है थोड़ी. Ankit, I want one vlog from you, like Dog Baba and 4 chapate in a day in the life of Almighty Ankit. अरे भाई, definitely भाई, why not, why not? करेंगे भाई, definitely. A lot of things are planned, लेकिन वही है. I hope I had 48 hours in a day. शायद definitely हम करेंगे. भैया आपको क्या लगता है, मैन यूनाइटेड कैसा खेलेगी इस सीजन? Well, the footballing philosophy will be, I think, genuinely he meant it. Eric Ten Hag meant it when he said कि भाई हमें एक तो यूनाइटेड को वापस से लाना है where they belong, but at the same time United has a certain way of playing, so we believe in that way as well. और Eric Ten Hag actually believes in that. If you see Ajax side in the last 4 years, तो मुझे लगता है they will go for it in terms of playing as well. और वो ज्यादा dogged नहीं रहेंगे. But will it be enough for them to kind of break through in the top 2, top 3? I doubt it. I doubt it. Having said that, be patient, Man United fans. I think they'll be fine. If they can get Frenkie De Jong, if they can keep Cristiano Ronaldo, then be so. Because आज भी अगर देखो तो yes, float कर रहे थे उनके forwards almost with Bruno playing just behind the striker. लेकिन in my opinion, they are still missing that striker. हाँ, Ronaldo is that guy, but let's see जब Ronaldo आ जाते हैं इस टीम में कैसे खेलती है. Definitely is a goat. लेकिन भाई in terms of gameplay कैसा होगा, build up from the midfield, वो interesting रहेगा. Chelsea never went for Dembele भैया. अरे CFC Blues, तो Chelsea were always interested, yes, लेकिन Chelsea did not go for Dembele in the last minute because Chelsea did not want to become a scapegoat. तो Chelsea ने बोला Dembele को, तो Chelsea were in talks with Dembele. They were not two ways about it. Definitely interested थी, और Chelsea definitely were in conversation, but we did not make any formal offer to him in terms of the contract. Definitely it was only verbal. और ये बोले कि यार we cannot negotiate further until आप decide करो कि आप हमें स्केपबोर्ड भी बनाओ कि हम ऑफर दे दें और आप ऑफर शॉप करो, जो होता है भाई ऑफर शॉपिंग. तो इसलिए चेल्सी डिड नॉट गो फॉर देम्बेले फॉर्मली, ऑफिशियली नहीं गए, बट अनऑफिशियली वी हैव डेफिनेटली स्पोकन टू हिम. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन हाँ, वी वांटेड देम्बेले यार, ही वाज ऑन फ्री. लेकिन हाँ, तो इतना सैलरी हम भी नहीं देते, दैट इज फॉर श्योर. आकी नहीं चाहिए, रुक जाए इस स्थिति में, क्यों भाई साइनिक? तो आपकी लेफ्ट सेंटर हाफ कुलिबाली, अगर 3 द बैक खेला है तो क्या होगा? लेफ्ट सेंटर हाफ कुलिबाली, सेंटर बैक सिल्वा, और राइट सेंटर हाफ कौन रहेंगे आपके लिए? कौन, हु इज योर राइट सेंटर हाफ ऑप्शन टू बिगिन द मैच? अगर 3 द बैक जाते हैं, अगर 2 द बैक जाते हैं, फिर भी आप बोलोगे कुलिबाली सिल्वा, बट कुलिबाली सिल्वा दोनों ही बेसिकली कैन नॉट प्ले ईच एंड एवरी गेम इन माय ओपिनियन. तो थोड़ा सा वहां डाउट है.
तो वी नीड समवन राइट। और एकी का मोटिवेशन ये है कि इन सिटी ही वाज द फोर्थ चॉइस सेंटर बैक, इन चेल्सी विल बी द थर्ड चॉइस सेंटर बैक, थोड़ा सा अपग्रेड है। और ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू चेल्सी ऑलवेज हेल्प्स राइट। मुझे भी यही लग रहा है। ओके फेयर इनफ, लेट्स सी। Ankit always supports other channels. I've seen it. My let us always support Ankit's two channels. Arey bhai means a lot, man. Always. Well, Lu Manu. The reason I support all channels is one thing, bhai, because they've always been supportive to me. Obviously, वो एक होता है human element. लेकिन भाई more than that, the fact is, again, just to share personally, I've been in many fields. I've been in many fields, and again, by my age, by my look, you can figure out that I've kind of seen life. तो मुझे पता है भाई कितनी मेहनत लगती है और कौन कितना डिजर्व करता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको बस। हाँ, not that I deserve more, they deserve more as well, definitely. लेकिन हाँ, everyone deserves, and even the people in the chat, without you all, the channels won't run. So it's definitely, it's a give and take relationship. And again, you're all my friends, man, nothing else. Talk about friends, अंशुमान एक friend है in the house, and people, in case आपने नहीं पता आपको, this is the United Road. Of course, Anshuman has been through a tough time this week, में, but definitely deserves all the support that he can get. So yes, do support him. And Anshuman, congrats भैया। आपको क्या लगता है, मतलब आज के परफॉर्मेंस के साथ, I know you are very level-headed fan yourself. What do you think would you take from this match? बोलिए आप चैट में, मजा आएगा। वेटिंग फॉर ऑलमाइटी व्लॉग्स, यस व्हाई नॉट यार। चेल्सी के लिए कुछ यार, मुझे ना एक ट्रिप करना है, एक ट्रिप एनीवे पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लेट्स सी, मैं करूंगा एक ट्रिप, उस समय वो व्लॉग में अपलोड कर दूंगा। लेट्स सी। चेल्सी के लिए कुछ प्रेडिक्ट मत करो। इंटरेस्टिंग मैन। Okay, Chelsea have agreed personal terms with Kalidou Koulibaly, Gazetta _IT. The Blues have also made an offer to Napoli, which is close to the valuation of the player. Let's hope. Let's cross our fingers कि हो जाए. And according to the analysis, Chelsea's main problem was inconsistency. They started off on a top flight and dipped their form that caused them the number one position they had for a long time. How could it change? Well, in my opinion, it's also about club instability. It has taken its toll eventually. यार आप कितने बार मैनेजर्स चेंज करो, आप कितने बार पर्सनल चेंज करोगे, एट सम पॉइंट एक कंसिस्टेंसी चाहिए, इवन इन टर्म्स ऑफ क्लब हायरार्की। तो वहां पर आई एम होपिंग दैट थिंग्स विल गेट बेटर, क्योंकि एक कंसोर्टियम आ गया। आई डोंट थिंक दे नीड मेनी चेंजेस राइट नाउ। तो लेट्स गो फॉर इट, एंड होपफुली इंजरीज भी नहीं हो, व्हिच आल्सो प्लेड इट्स पार्ट लास्ट सीजन राइट। एंड ओके, ये तो हम Kalidou Koulibaly has accepted Chelsea's 4-year contract offer, 3-year with option. Chelsea are ready to pay around 40 million. Is down to Napoli. हाँ, जैसे मैंने बोला, 40 million euros is the offer. It's a 3-year contract, and he is okay as per the reports, and that is for real. और वो accept कर लिया है as per CFC Blues. So thank you Alfredo Pedula को भी। लेकिन भाई नापोली नापोली है, और अगर भाई चांस, यार यहाँ पर फुटबॉल प्लीज जो बोल रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर सिटी आ गई बीच में, अगर मैन सिटी आ गई, हाँ कालिडो कुलिबाली शुरू करना चाहेंगे मोस्ट मैचेस, बट इवन ही इज एट दैट स्टेज ऑफ द करियर जो थोड़ा सा लीवे ले सकते हैं। अगर वो नहीं भी खेलते ना नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ही विल बी देयर फॉर सेनेगल, यू नो इट। Aki is a BTech. Phil Jones. Oh, Phil Jones is an asset. Phil Jones, by the way, भाई big up to him यार, इतने साल मतलब he's kept himself motivated. Talk about motivation यार, Jack Wilshere unfortunately retired, so that is something not good for Arsenal fans. They were hoping he'll somehow come back. Maybe शायद say Reece James will play at right center back. Okay, तो right wing back कौन होगा? Right wing back कौन होगा फुटबॉल पिक्स? वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। मतलब राइट विंग बैक हमें चाहिए थे सर्टेन प्लेयर्स, मे बी हडसन ओडोय को वापस से ट्राई करेगा, आई होप नॉट यार। मतलब एज मच एज आई वुड वांट हिम टू गिव हिज ऑल, नो मैटर व्हाट द पोजीशन ही प्लेज, हडसन ओडोय आई डोंट थिंक ही हैज द राइट माइंडसेट टू प्ले राइट विंग बैक। मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, एंड पीपल सेइंग दैट he's forward, he's never played right wing back, that's also fair enough, but he's too young and he can easily be molded as well. वो I don't think he has the right as in just the attitude, in my opinion. I'm certainly saying that. Eric Bailly and Alex Telles might just be good covers for the centre back position after seeing them today. Oh, Alex Telles playing a centre back. भाई वही माना मैं बोल रहा था कि Alex Telles playing centre back, does it remind you of Rojo? I don't know. I don't think so. Not a daily blend of Rojo. I don't think so. It's just pre-season. But you never know. At least Ake would be an upgrade. By the way, Eric Bailly was good. Eric Bailly was actually good. उन्होंने एक last minute block भी किया, तो काफी अच्छा किया. At least Ake would be an upgrade on Malang Sarr. That is the spirit. That is the spirit, Chelsea fans. Come on, मैं तो Malang Sarr को count ही नहीं कर रहा. Josko Guardiola also very close. हाँ, exactly. I'm hoping he just
ग्वार्डियोल, डिस्पाइट मैं इनिशियली बोल रहा था भाई हमें रिजेक्ट्स मिल रहे हैं, नाकी जोस्को ग्वार्डियोल हमारे फर्स्ट चॉइस थे, टुकल के फर्स्ट चॉइस थे. आई राइट नाउ फील कि जोस्को ग्वार्डियोल इज नॉट एज गुड एज Aki राइट नाउ, but in 6 months of time he will be when once he's ready with the Premier League. But definitely, so I agree that Guardiola जाना चाहिए City so that we are getting Aki. Win-win हो जाए भाई, मानो absolutely. Which is the player you think will not play in the World Cup, although he has potential, but just because he didn't get option to play in the club match. Interesting. Not go to the World Cup, I'm not sure, लेकिन मैं बता चुका हूँ कल ही with Rafinha. Yeah, he's very good for Brazil as well. लेकिन मुझे लगता है Brazil has इतना talent. Talk about Brazilians, भाई Lucas Paqueta, उनका क्या चल रहा है. लेकिन I think Rafinha, the fact that वो बारसा जा रहे हैं, हाँ उनको मैचेस मिलेंगे, मिनट्स मिलेंगे, लेकिन would he not almost play a priority role with Dembele being there? हाँ Dembele काफी injury prone है, but how can you just decide कि he injured next season as well? Especially with Fati coming, I don't see him playing on the left wing. तो Fati is coming back and Ferran Torres obviously भाई वो भी 50 मिलियन से ऊपर आपने पे किया है. So it is kind of surprising for me. So Rafinha, I just called that he might, get a fewer chances than what is expected. Darwin Núñez will also get fewer chances initially, but eventually करेंगे. तो और Uruguay के लिए definitely will play because it's a big squad. So very difficult call. Maybe मैं बोलूँगा potential Madison. Madison has been an unlucky player for England. I like that player. James Madison is one of the players मैं बोलूँगा he'll play a lot for Leicester, but I don't see him going to the World Cup or playing in it. Absolutely not. That is my pick, and maybe even Chilwell. I know it depends on कैसे करे Chilwell for Chelsea this season. He is a person जो miss करेंगे because of the Southgate's tactics. For whatever reason, he does not like Chilwell, I believe. Would you take Sancho for Sterling at Chelsea? No, absolutely no. No. Yes, Sancho was a Chelsea fan. I know that. Sterling was a Londoner as well. Having said that, doesn't matter. Sterling is definitely the better finished product. Yes, he's 27 plus, whereas Sancho is very young. Sancho का ही सीलिंग हाई है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, बट अगेन स्टर्लिंग अभी अच्छा है इन माय ओपिनियन. यस ही मिसेस चांसेस, नॉट द आइडियल पर्सन, बट सो डज सैंचो. तो मैं तो लूंगा स्टर्लिंग को डेफिनेटली, नो टू वेज अबाउट इट, बट सैंचो, mark my words, he'll have a much better season this time. Why Chelsea is not going for Pau Torres? भगवान जाने भाई. अनामुल बढ़िया लगा आप आए हो. होपफुली आप नाल की सब्सक्राइब किए हो, not only to Almighty Blues FC but to Almighty Sports Plus. But yeah, definitely like the stream. Pau Torres, यार ओनली थिंग कैन बी मेरे ख्याल से द फैक्ट कि आकी के पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, प्रूवन एक्सपीरियंस है विद बोर्नमथ, ही वाज वेरी गुड. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद आकी. प्लस वो जाता है चेल्सी डीएनए, तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन. पाउ टोरेस वुड बी अ बिट ऑफ अ गैम्बल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप सोचो, बिकॉज द एक्सपीरियंस सेंटर हम जो जा रहे हैं अभी कालिडू कुलिबाली है, विच इज आई थिंक वेरी गुड. वैसे कितना अच्छा फिट होगा विद सिल्वा कुलिबाली, परफेक्ट. माना मैंने, आप तो जानते हो भाई, सबसे पहला कॉल मेरा था पाउ टोरेस. हु शुड चेल्सी साइन, पहला नाम मैं लिया था पाउ टोरेस का ही. लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन यार, ग्वार्डियोल वाज द फर्स्ट टारगेट फॉर टुकल एज पर द रिपोर्ट्स, who at that time wasn't ready. अभी पता नहीं, because of Pep maybe he's ready to hear. Let's see. Kukurea and Guardiola deal will be done back to back before. Yeah, looks like it absolutely. Kukurea तो just a matter of time. Guardiola का अभी थोड़ा सा लंबा चल सकता है in my opinion. Let's see. लेकिन हो जाएगा. अडामा ट्रायोरे कहाँ है? हाँ, ये आई थिंक ही इज बैक टू वुल्व्स राइट टेक्निकली. तो अडामा ट्रायोरे इज बैक टू वुल्व्स, लेकिन हाँ, ही विल काइंड ऑफ रिमेन देयर बिकॉज़ रिमेंबर वुल्व्स आर आल्सो गेटिंग रिड ऑफ ट्रिंकाओ ना. ट्रिंकाओ जो थे बार्सिलोना प्लेयर, बार्सिलोना सेलिंग ट्रिंकाओ टू मतलब क्लब, तो वहां पर दैट्स द रीजन व्हाई ही विल काइंड ऑफ बी देयर इन माय ओपिनियन. Pep would not even take one player from your Chelsea, Ankit. Oh my God, really? Are you telling me? I all respect you, Manu, love you, you know that. But Pep, are you telling me Pep at this point in time? Let's see a position. Uh, you know what? You have a point certainly. Lekin I really feel that. Well, don't you think Thiago Silva is better than John Stones? John Stones has done fantastically well in last season, but Thiago Silva, even at 37, is not better than John Stones right now. I'm just telling you, Pep might not take him. That's a different factor. That's what maybe your point is. And left back, mein, don't you think that Chilwell will be one person that City would love if Chilwell is available? I'm just putting it out there. Chilwell and Walker. Imagine that for England, that could be your fullbacks as well. So I have a point. थोड़ा तो है मेरा. Or the fact that in certain games, not in all games, in certain games, I think City also lack a N'Golo Kante kind of player.
destroyer. आप देखे थे against Real Madrid. So there are certain moments where Pep might want to take certain players from Chelsea because that doggedness and that kind of physicality is kind of still थोड़ा सा missing in City. Of course, they are the best team in England right now as things stand, best squad. लेकिन मैं बोलता हूँ यार, it's never complete. It's never complete. And that's what Pep thinks. That's the way Pep thinks, right? If I'm not wrong. Man City starting 11 pick कहाँ होती है? Draft pick होता है. अरे आदित्य गुप्ता इन हाउस. नाइस नाइस आदित्य यार, आज भी बढ़िया स्ट्रीम रहा है अभी तक. तो होपफुली विल हैव द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एज वेल. बढ़िया विद योर सपोर्ट एवरीवन. यस डू लाइक. और आदित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आदित्य, यानी सब लोग भी कल रात को 11 बजे अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज 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 बी देयर नो मैटर व्हाट. आप जरूर रहिएगा. ये मुझे सेटअप करना पे यस, लेकिन हाँ वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हु नेवर कम ऑन एनी ऑफ अ चांस इफ आई रिमेंबर राइट. So please, come on. Hopefully it'll happen, but yeah, definitely it's on as of now. Pep would not. Okay, ये तो ले लिया. Man City भी ले लिया था. Pep will surely love to have James. James also. मैं जानबूझ के बोला नहीं मानव because I know that James to City already शुरू हो गए just like James to Real Madrid. Mount, yeah, why not? It will be David Dia. I don't think he will play in World Cup because of Luis Enrique. Oh yes, great call. Great call. Yes, because of Luis Enrique, absolutely. He likes a ball playing player. I think even Kepa का chance है. अगर Kepa जाते हैं Lazio or anywhere else, Newcastle or anywhere else. Newcastle तो नहीं, खैर they have signed Nick Pope. But if Kepa leaves, he might get a chance as well over Unai Simon and David Dia, in my opinion, because Kepa has improved. लेकिन हाँ, I hear you. David Dia आज by the way यार एक, I don't know if you guys saw, एक बढ़िया सेव था David Dia का from his feet. समथिंग जो हम रिलेट करते हुए डाविड डिया स्पेशली फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो प्रॉपर सेव था. इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेव. देन लेट्स सी व्हाट यू थिंक अबाउट ब्रेमर. ब्रेमर इज ब्रिलियंट, बेस्ट डिफेंडर इन द सेरिया. लेकिन ऐसे ना मैं थोड़ा सा हेजिटेंट रहता हूँ दूसरे वाले लीग से बेस्ट डिफेंडर लाना. रिमेंबर वी हैड गॉट वन, ऑक्सबर्ग से हम लाए थे. किसको लाए थे? बाबा रहमान को लाए थे. He was the best defender of the Bundesliga in that particular season. Augsburg best left back in the Bundesliga. ठीक है. और क्या हुआ बाबा रहमान का आप जानते हैं, थोड़े इंजरीज थे, बट कम ऑन, व्हेनेवर नॉट इंजर्ड आल्सो 2016 में काफी हगे थे. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि सब लोग सेम होते हैं, पर थोड़ा हेजिटेंसी आएगा. ही इज नॉट योर रूडिगर, ही इज अ डिफरेंट प्लेयर. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर इंटर इन माय ओपिनियन अभी के लिए. So I would still prefer Koulibaly. Where to watch Chelsea's preseason games? Game Baba in the house. भाई फिगर आउट करेंगे. अगेन मैं यार बिग अप टू श्रेय पाटिल भाई. श्रेय पाटिल को शाउट आउट जाता है. उन्होंने एक्चुअली डिस्कॉर्ड लिंक में मेरे लिए सेटअप भी किया है. मुझे बनाना है और मैं डिस्कॉर्ड में आने वाला हूँ, एक्टिव होने वाला हूँ टाइम निकाल के. तो होपफुली वी विल ट्राई टू डू समथिंग. होपफुली लेट्स सी. ओके यू टेक आकी. नहीं भाई नहीं, इम्पॉसिबल. थॉट्स ऑन कुलिबाली सिल्वा आकी ट्रायो. मैंने ऑलरेडी दे दिया अभिनंदन, आप लेट आए हो, लेकिन बढ़िया लगता है मुझे. तो मुझे लगता है आर्ग्यूबली नॉट एज maybe not as good as last season, but I think comparable to last season, क्योंकि यार वहां पर एस्पिलिक्वेटा लास्ट सीजन में was kind of on the डाउनहिल, और क्रिस्टियनसन को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा था लास्ट सीजन के परफॉर्मेंस के हिसाब से. तो आई थिंक यस रूडिगर इज indispensable, लेकिन कुलिबाली इज एन अपग्रेड टू एस्पिलिक्वेटा ऑफ टुडे. Okay, now we have Phillips the Destroyer. Silva is better defender than Stones, but Stones is a better ball player and suits you know what मैं बोलूंगा मानव, you have a point absolutely, मैं disagree नहीं कर सकता उससे. मैं यही बोलूंगा. देखो थियागो सिल्वा I think reads the game better than anyone in the Premier League. सच में बोल रहा हूँ. Virgil van Dijk and Thiago Silva read the game like superb. Virgil van Dijk and Thiago Silva जैसा reading the game का जो है ना, I don't think so. और एक एस्पेक्ट जो काफी लोग है, नथिंग अगेंस्ट मैन सिटी फैंस, यहाँ पर मैं आई एम जस्ट बीइंग डिफेंसिव अबाउट सिल्वा, राइट. थियागो सिल्वा, हैव यू सीन हिम क्लियरिंग द क्रॉसेस? हैव यू सीन हिम हेड द बॉल्स? मतलब इट इज सो, मतलब जॉन टेरी हैज सेड कि डोंट फील इट, बट द गाय इज एक्चुअली पुटिंग हिज हेड टू एवरी बॉल. He is that guy. और वो दिखता नहीं. He doesn't make it so dramatic. That's the only thing with Thiago Silva. As in, if you want to say, simply मैं बोलता हूँ, इन डिफेंस लाइन बोल रहा हूँ, जॉर्डन पिकफोर्ड जो करता है ना एवर्टन के लिए इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द सेव, जो ड्रामा करता है, वो वर्सेस थियागो सिल्वा ऑपोजिट्स है. आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स थियागो सिल्वा का है ना गोज अंडर द रेडार. लेकिन हाँ डेफिनेटली भाई पेस और व्हेन इट कम्स टू बॉल प्लेइंग, I 100% believe that Stones आज के दिन में is slightly better, but in terms of other aspects I would still pick Thiago Silva overall in my opinion. आज के दिन only for this season. Gnabry to Chelsea, so or might. Well, Gnabry to Chelsea मैंने बोला है so अभी.
लेकिन लग रहा है कि यार अगर जाएगा ना तो चेल्सी जाएगा, उसका है माइटी, अगर इफ ही लीव बायर्न म्यूनिख ही गो टू चेल्सी, दैट्स द होल पॉइंट आई एम मेकिंग। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कुलीबाली तो यार माइटी लग रहा है, कुलीबाली डेफिनेटली माइटी लग रहा है। एंड भाई हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, आयुष बढ़िया भाई बढ़िया, और अच्छा लगता है, आप आते हो हमेशा, डू लाइक द स्ट्रीम। एंड कल कल का याद रखना भाई, कल जरूर ज्वाइन करना, बहुत स्पेशल स्ट्रीम होने वाला है 11 बजे, छोटा स्ट्रीम होगा और अच्छा होगा। तो यहाँ पर वेल लेट मी टेल यू, मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस मैंने सम अप किया है क्विकली, मैं वापस से बोलूं तो बेस्ट पार्ट वाज द फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो देखने को मिला, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल देखने को मिला, और ऐसा नहीं लग रहा था पीपल आर आउट ऑफ देयर प्लेसेस। इनफैक्ट जो नहीं होते उस प्लेस में वो भी खेल रहे थे, वो भी अच्छा खेल रहे थे, वो है एलेक्स टेलेस सेंटर बैक। हाँ, एलेक्स टेलेस लेफ्ट सेंटर बैक, यू हर्ड इट राइट इन सेकंड हाफ। लेकिन मेरे ख्याल से सैंचो ने काफी इंप्रेस किया, दैट इज द गाय दैट मुझे इंप्रेस किया काफी। फ्रेड ने काफी इंप्रेस किया है, ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशनिंग अच्छी थी, ही वाज नॉट गोइंग ऑन टू एवरी एज इन थ्रू बॉल, हाई थ्रू बॉल फॉर नो सेक, मतलब वो एक फिलॉसफी लग रही थी मुझे, फ्री फ्लोइंग लग रही थी। रहीम स्टर्लिंग कैन बी कंसीडर्ड, बट हाँ, प्री सीजन था आयुष, तो ज्यादा रीड मत करिए, बिकॉज लिवरपूल आई थिंक दे वर नॉट प्लेइंग विद द फर्स्ट टीम ईदर, तो फेयर इनफ। Raheem Sterling can be considered new Chelsea player. Documents are signed, medical complete in London, and player flying to LA in order to unveil as new CFC. Fabrizio Romano ने बता दिया है. Thank you भाई, thank you. Well, that is like obviously ये आने ही वाला है, but again इतना build up करते हैं ना लोग न्यूज़ के. And okay, by the way, Dembele, Dembele was with the team भाई, Dembele was with Barcelona as well. Fabrizio Romano ने वो भी बोल दिया है, तो Dembele to Barcelona वापस से हो रहा है, absolutely. And yes, Rocky, you're right. Thanks for sharing that from Fabrizio. Pogba to Juventus, भाई. By the way, hope you're subscribed. And not only that, do check out our other channel, Almighty Sports Plus. We are on the road to 4K वहाँ, we are on the road to 5K यहाँ, so let's get us there. But yeah, Pogba, I think Juventus will have a madness of a midfield, like I've been saying. So I think Pogba has a lot of protection behind him. He'll be much better in Juventus again. But will he be able to get them the Champions League? Nahi, in my opinion, nahi. David Dia will improve. Okay, fair enough. So you're giving him time to improve. Fair, and just like Eric Ten Hag will probably will. And yes, people, 100 likes तो कर दीजिए. Come on, 100 likes तो बनते ही है. इतना तो बनते ही है. Let's be honest. Defender is not an issue. Forwards from other leagues is tougher. Okay, fair enough, Adway, absolutely. But वही है, मैंने एग्जांपल्स दिए है ना, इन टर्म्स ऑफ डिफेंडर्स भी अच्छे नहीं किए, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि चेल्सी रिलक्टेंट थी। रिमेंबर देयर वाज अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आदवे कि यार वी आर लुकिंग एट वन प्रीमियर लीग प्रूवन डिफेंडर, वन यू नो वर्ल्ड सुपरस्टार, ये है हम लोग का ट्रांसफर स्ट्रेटजी, इज व्हाट आई हर्ड, बिकॉज और कोई स्ट्रेटजी थी नहीं, बिकॉज ऑफ नो डायरेक्टर रियली, राइट? एंड यस पीपल, एब्सोल्युटली थैंक्स मानव. The best thing from today's match is we were able to keep clean sheet against Klopp's Liverpool. Almost miss कर दिया था. Salah should have scored two. Let's be honest there. Maybe Salah should have scored one. Darwin Núñez should have scored one. 4-2 या 5-2 होना चाहिए था, to be very honest. लेकिन हाँ, fair enough. I could not watch the game. How was the DR football in Ten Hag's first match? Yeah, मतलब I actually didn't mind it at all. I didn't mind it. मैं बोल रहा था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि anyone is out of place, including David De Gea. So maybe there is a point that he's going to learn. He's going to basically already pick up his style. लेकिन हाँ, ज़्यादा you could see him be the old David De Gea only. लेकिन at the same time आप expect क्या करोगे? First match of the preseason, right? So I think have patience. He'll be better. Big up again to 8744 people. Do check him out. I can surely say Ronaldo not going to PSG. Too many. Well यार अद्वै, ये वाला comment मैंने देखा था भाई, ये वाला कमेंट थोड़ा मत करिए क्योंकि इट गेट्स रेसिस्ट, सो लेट्स नॉट गो दैट अवे. आपको बिग अप, ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड. मैडी कैश, रीस जेम्स का बैकअप कैसा रहेगा? मैडी कैश बैकअप के लिए आएगा नहीं अभिषेक, दैट्स अ प्रॉब्लम. मैडी कैश विल नॉट कम एज अ बैकअप अनफॉर्चुनेटली. Anthony United needed. What a debut for Ten Hag. He defeated our main rivals Klopp's Liverpool by clipping. Yeah, exactly. लेकिन again pre-season Ayush. Apart from Aki, why are Chelsea looking at Premier League defenders? आई थिंक कौन अवेलेबल कौन है फुटबॉल क्योंकि आई थिंक हम मैक्स किलमैन के साथ हुए थे, वेबस्टर के साथ हुए थे लिंक, और प्रीमियर लीग डिफेंडर में किसके साथ लिंक हुए थे? आई डोंट रिमेंबर एनी डिफेंडर जो अच्छा है, जो एट दैट लेवल व्हिच कैन टेक चेल्सी अनदर लेवल और काइंड ऑफ गेट देयर. आई डोंट थिंक सो कोई अवेलेबल है. अगर जाहिर है तो व्हाई नॉट जस्ट प्ले चालोबा, ही इज अ प्रीमियर लीग डिफेंडर, प्ले हिम मोर.
हैवर्ट्स और मर्नर बिक गए, अब तो फीफा में किसको लेना? आज बात करते हैं भाई, करेंगे भाई 11:30 बजे, विल ट्राई एंड डू स्ट्रीम। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई, मतलब अगेन ब्लू मैन्यू, थैंक यू फॉर दैट। अदवे, ही इज अ बिग सपोर्टर ऑफ द चैनल, आई लव हिम एज वेल, जस्ट लाइक आई लव ब्लू मैन्यू एंड एवरीवन एल्स। लेकिन अदवे यार, थोड़ा सा आप मॉड हो तो यार थोड़ा सा समझिए, देयर इज अ रीजन आप देखते हो, स्पेशली व्हेन यू कमेंट ऑन वीडियोस, राइट? एवरीवन टेल मी, अगर कोई भी कमेंट है ऑन अ वीडियो व्हिच आई हैव नॉट रिस्पोंडेड टू, there is the reason I'm not responded to. Think about it. Okay. VVD and Thiago Silva are best at defending, agreed. But Pep never wants an out-and-out defender. He demands ball playing. That's why Diaz, Stones, and Laporte fit the bill. Okay, fair enough. So fitting for Man City के हिसाब से, we can buy that point. Buying defenders from Bundesliga club is a gamble. Some are talented, no doubt, but German clubs are known for their attack. Therefore, Bundesliga is an attacking league. Oh yes, that you can argue that Italian league में आपको defenders मिले, definitely better मिलेंगे than Bundesliga, kind of club. But can you generalize आज के दिन में? There's so much movement over countries, especially COVID season being better from the last say 6 months. I think यार जनवरी से जो होने वाले movements, I don't think हम इतना जज कर सकते हैं, because a lot of players are kind of giving their all. लेकिन I understand your point absolutely. Like at the end of the day, Premier League proven defender definitely is more, kind of safe. अगर आप safe जा रहे हो तो, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि यार बाहर से नहीं करेगा। अच्छा, come on, there are a lot of players who've done fantastically well. Thiago Silva, हम उसके बारे में बात करते हैं भाई. I know his experience and all that, but he's played in the League in Serie A, and he's done fantastically well, right? So there are people kind of really, take like fish to water. एंड डेविड एंटॉ स्पोर्ट्स को भी बिग अप है भाई, सब लोग चेक करिए डेविड एंटॉ स्पोर्ट, बढ़िया चैनल है, आप लोग देखते होंगे काफी बार हमारे चैनल और हमें इनके चैनल पे। लेकिन डेविड एंटॉ स्पोर्ट्स, डेविड ब्रो, ऑलवेज गुड टू सी यू ब्रो, एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट Koulibaly, what do you think about Lewandowski first, almost kind of changing his mind, but then still being with Barca, and do you see any other attacker coming, maybe a Raphael, Leao, maybe a Gnabry, I don't know, let me know. Okay. Bayern will go for King Kai Havertz. This is not FIFA football, please. Come on. Eventually, maybe, yeah. Who knows? David Nunes needs to learn how to do shopping. Yeah, Pratham man. Why Frenkie De Jong saga? What's it's happening in Barcelona? हाँ, तो ये मैं बता दिया हूँ. आप अगेन लेट ज्वाइन किए हो. That Frenkie De Jong looks like, यार जो फी अग्रीड है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है फैब्रिशियो रोमानो ने कि चेंज नहीं है. तो 20 मिलियन जो है एड ऑन्स, उनका क्या क्या होने वाला है? 20 मिलियन, दैट इज व्हाट इज लेफ्ट, ऑल दैट इज लेफ्ट. एंड नाउ फ्रेंकी डी यंग लुक्स लाइक, अगर वो अभी भी चाहते हैं बार्सिलोना में रहना, लेकिन आई थिंक वो फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करने के बाद ही विल मूव, इन माय ओपिनियन. अगर बार्सिलोना स्टिल आर गोइंग फॉर सेंटर हाफ, व्हिच आई बिलीव दे आर, तो बिकॉज कोलिबाली टू चेल्सी अब लग रहा है, तो लग रहा है कुंडे टू बार्सिलोना और लेवेंडोस्की टू बार्सा, तो भाई मेडिकल्स भी कर दिया बंदे ने, तो लुक्स लाइक वो भी होने वाला है. बार्सा विल बज एंड गिव दैट व्हाट बायर्न नीड. सो लुक्स लाइक फ्रेंकी विल गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. But okay, let's see. Will Raphael be a marquee signing by Chelsea? I don't think so. Anamol, मैंने बता दिया already. Again, like काफी discussions हुए हैं. I'm repeating a lot of stuff. For people who might have been there from before, don't get bored. लेकिन people coming on, do watch पहले से थोड़ा सा, क्योंकि हमने काफी बात की है सब, whatever the news was. So in my opinion नहीं होने वाला. हो तो बढ़िया है, don't get me wrong, but नहीं होने वाला. अभी यार इट्स स्टिल इंडेफिनिट आयुष, तो मुझे नहीं लगता ही विल बी जॉइनिंग एनी टाइम सून. लेकिन वही है, मतलब आई डोंट थिंक दे विल मेक अ न्यूज़ आउट ऑफ इट ना, वो आ जाएगा देन पता लग जाएगा, इन माय ओपिनियन. इफ ईटीएच गोस टू विन अ क्वाड्रुपल, ही स्टिल माय सेकंड फेवरेट बॉल्डी इन यूनाइटेड हिस्ट्री. फर्स्ट विल ऑलवेज बी हावर्ड वेब. यार आज तो ब्रूनो कर रहे थे बाय द वे, जस्ट सो यू नो, लेकिन हैरी मैग्वायर इज द कैप्टन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आप बोलिए भाई. ओके, let me Diaz बहुत कोई नहीं. How can Barca play such a fee for Raphinha but cannot pay the own players wages? Rocky, कल की स्ट्रीम में आप भी थे भाई, आपको पता है मेरे व्यूज यहाँ पर है. I don't think so. Vincent Kompany came from Bundesliga as well, a Premier League legend. मतलब वही है, I don't think you can generalize, लेकिन I think it's Chelsea के लिए, because of what has happened. I was talking from a Chelsea perspective, no? तो Chelsea के लिए जो हुआ है ना, I don't think यार it's only fair to say that okay, that a Premier League proven player is safer than other leagues player. That's what मैं बोलूँगा, because of what has happened with Chelsea transfers. I would not put it generally. Tarkowski is not a Tarkowski, if I'm not wrong. Yeah, he has been taken Everton. I thought he's been taken by Everton, नहीं क्या? हाँ भाई, Tarkowski is gone to Everton.
Why didn't we go? Akash बोल रहे why didn't we go? Well, Tarkowski could have been a good option, लेकिन I think just like a Pep, Tuchel also wants his centre halves to be more ball playing, be able to read the game rather than as in proper defender just right. मुझे लगता है. Or at the same time, yeah, he wanted a left-footed. इसलिए Nathan Ake is what his preference is. I think Barcelona will now finally submit a 55 million bid for Robert Lewandowski, and most probably Bayern will accept that bid. In my opinion, yeah, I agree there as well. But the fact is, भाई, Raphinha का, I just covered that news as well. Raphinha has been done. Official bid चले गया. The official bid of Raphinha is actually less than official bid of Chelsea. Let's get that right. ठीक है. लेकिन Raphinha wanted that, and of course, Barcelona won that, and of course, Leeds are also having no problem. Deco always, prefers that as well. Looks like. So that is why, हो गया वो over the course of time. हाँ, add-ons मिला के they're kind of matching it, लेकिन base Chelsea से कम है. That's what I'm saying, right? लेकिन हाँ, Lewandowski का same चीज हो सकता है. अगर base कम होगी तो add-ons will kind of match what Bayern Munich are asking, right? Okay. मराठी दीपक नाइस यार, नाइस कोई नहीं. अरे भाई सब लोग अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मत भूलिएगा. अगेन आई नो आई एम रिपीटिंग, बट आप ये बोलिए भाई, चेल्सी फैंस और न्यूट्रल्स, शुड चेल्सी गेट रिड ऑफ हकीम जिएक, और अगर हकीम जिएक को रिड करते हैं तो शुड वी गेट अ ग्नाब्री, और शुड वी गेट अ राफेल लियाओ, गो बिग फॉर हिम, और वी शुड गो फॉर मे बी अ जेरार्ड बोवन, समवन प्रीमियर लीग प्रूवन. क्या लगता है आपको? दैट इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर एवरीवन. मेरा प्रेफरेंस तो ग्नाब्री है, बिकॉज मुझे लगता है भाई इट कैन बी अ बेटर डील देन इवन रफीनिया जो आता, बिकॉज आज के दिन में ग्नाब्री इज वाओ, वो टू अप फ्रंट के स्ट्राइकर पार्टनरशिप में भी खेल सकता है, फॉल्स नाइन इज वेल खेल सकता है. दैट इज व्हाट. और कुलीबाली टू चेल्सी, हाउ मच यू रेट इट? हाँ, मुझे नहीं लगता पावार्ड और उपमैकानो जो स्टोरीज आ रहे थे वो होने वाला है. किम्पेम्बे भी नहीं होने वाले, बिकॉज एकी इज गोइंग टू कम होपफुली इफ ग्वार्डियोल गोस टू सिटी, राइट. वो लग रहा है कि यार मोस्ट प्रोबब्ली हो जाएगा. But United, great win. One big thing that United अभी pending है ना, लिसांड्रो मार्टिनेज तो हो जाएगा, एरिक्सन भी हो जाएगा. फ्रेंकी डियोंग का you guys are waiting, but I still feel that Frenkie de Jong will move to Manchester United because जूस कुंडे और लेवेंडोस्की जाएंगे बार्सिलोना. So all in all win-win हो रहा है, मुझे लग रहा है. लेकिन हाँ, मैथायस नुनेस मुझे नहीं लगता कोई मूव होने वाले टू बिग क्लब, अनलाइक लास्ट फ्यू सीजन आए थे. और दिबाला का क्या होगा? दिबाला तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नहीं लग रहा अभी, तो दिबाला बैक टू इंटर मिलान विल बी स्टार्टिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग. टॉकिंग अबाउट स्ट्राइकर्स, भाई स्कमाका और एकिटिकी और स्कमाका में से किसको जाना चाहिए पीएसजी को? मतलब आई बिलीव एकिटिकी का न्यूकासल कैंसिल हो गया, नहीं जा रहे, तो स्कमाका टू पीएसजी आई थॉट वाज क्वाइट लाइकली, बिकॉज पीएसजी आर साइनिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप नहीं जा रहे, वो भी है, तो दैट मेड सेंस. लेकिन एकिटिकी भी इज नॉट इन दैट रेस, सो हो सकता है they might just go for Ekitiki because Skamaka may not want to play as backup for a few months even for whatever reason. So who is the better striker? In my opinion, अभी भी मैं बोलूंगा Skamaka is the better striker at this point in time from what I've seen little. लेकिन हाँ, let's see PSG, yes PSG यार, क्या ही तो बोलूं उनके बारे में. And आज जॉर्जिनो ने स्टेटमेंट दिया है. People Chelsea fans before ending, जॉर्जिनो ने बोला है कि yes I am mostly staying in Chelsea Football Club. I love it here. अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली आई एम स्टेइंग. सो जॉर्जिनियो अगर स्टे कर रहा है, दैट मींस वी आर नॉट गोइंग बिग फॉर फ्रैंकी डी जॉन्ग, वी आर नॉट गोइंग बिग फॉर डेक्लन राइस. दैट्स व्हाट मुझे लग रहा है. यार सांगिक, चीटर मत बोलिए. आई वुड सजेस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज आवर प्लेयर हु एक्चुअली served us well. He didn't leave in a bad way, unlike maybe Christensen or Thibaut Courtois. तो मैं चाहूंगा नहीं आप बोलिए, just a request. Also Deco, yes, definitely, bhai, he was a Barca legend. He was a Chelsea player. He was a very good player for Chelsea at this, right? He was a Barca legend. So obviously, यार, आप सोचो उसके नजरिए से भी. Not just that, Raphinha himself wanted Barca. और thirdly, Deco had given Raphinha, आपको याद है तो 48 hours दिए थे. तो Deco ने चेल्सी के लिए मना नहीं किया. 48 hours उसने बोला था भाई Raphinha, आप डिसाइड करो, बारसा आप डिसाइड करो, ठीक है, 48 hours दे रहा हूं आप दोनों को, आप लोग डिसाइड करो, नहीं तो चेल्सी जा रहा है. तो डेको दिए थे, तो डेको यार एटलीस्ट ही गॉट अस इन्वॉल्वड एंड got us to put the bid in, and got us to accept, and then got Leeds to accept, who knows. So he might have played a part. We don't know the real inner stories, but again, as per reports आप बोल सकते हो he is preferred Barca or Chelsea, but I don't think वो हमें salty होना चाहिए उस बारे में really. I am little bit about other things, but yeah, वो तो यार more about the ethics that I spoke about yesterday a little bit. Again, nothing against any club, but it's just the rules of La Liga, or the rules of FIFA
generally, which I feel it's not really fair at some point. Um, Upamecano is a utter flop. Let's see भाई, मतलब एक सीजन तो काफी अच्छा किए थे, पहला सीजन तो बायर्न में, so you cannot really proper flop yet. Maybe he comes back and proves everyone wrong. But till now I agree with this statement till now. Young fans of Manchester United, okay, backing ETH for Maguire captaincy, but elder fans can't take that. Interesting. Wow, वहां पर एक rivalry शुरू हो रही है लग रहा है. Sterling, Gnabry, Matheus Nunes नहीं आ रहा है, normal. Matheus Nunes looks like he's not coming because of Jorginho's statement जो मैंने बोला अभी. नेथन आकी, कुलीबाली, क्लॉस भी नहीं आ रहे, मोस्टली क्लॉस भी जा रहे हैं टू मार्से, लुक्स लाइक. हैविंग सेड दैट हाँ, सर्जिनो डेस्ट का अभी भी चांस है, अगर वी आर गिविंग अलोंसो एंड आस्पी, जो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता हो सकता है एब्सोल्युटली. एक और चीज है, मैंने बताना भूल गया भाई. तो दिस इज स्लोनिना, गैब्रियल स्लोनिना जो है, ही वाज बेसिकली वेरी वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड टू चेल्सी, बट ऑफ कोर्स एक गोलकीपर है बैकअप, तो he has apparently agreed to Chelsea's terms. ठीक है, and I think if I'm not wrong, from US, he plays in the MLS. He will be on loan to that in the MLS, and then maybe coming back to Chelsea as a backup goalkeeper next season. तो ये बड़ा न्यूज़ है for Chelsea fans. Technically आप बोल सकते हो ये almost होने वाला है along with the Sterling as well. लेकिन हाँ, not so big news, but it is definitely important to remember for next season. Okay, Skamaka is what Sani is going for. Deco is also Barca player. In fact, he's a Barca legend. मैं तो बोलूँगा at least a cult player, definitely. Ankit, name a former Chelsea player you would call a cheater. Name a former Chelsea player you would call a cheater. Cheater, मतलब someone who actually cheated. So cheater भाई, someone who actually cheated. मतलब मैं तो बोलूँगा भाई, it has to be Thibaut Courtois भाई. Thibaut Courtois, even Christensen. मैं Christensen का क्यों बोलता हूँ? The guy comes across as very soft spoken. वो सब I agree all that. लेकिन यार 10 साल आपने दिया, चेल्सी ने उसको पाल पोस के बढ़ाया है. The way he has left, the way he kind of got about, I would say almost a cheater. हाँ, maybe it was unintentional, whatever. But come on, he's not a baby as well. So I would call them that. Old former player to call a cheater, भाई, I don't know. I don't think Chelsea में बहुत लोग छोड़े, on a bad note. Maybe Adrian Mutu. Adrian Mutu is the guy, because of obvious reasons. Adrian Mutu is the guy that I remember. I would call him that because yeah, he did wrong. He did wrong. That was cheating. Yes, absolutely. Koulibaly's agent. Oh wow, nice. Uh, डिलीट नाउ क्लोजर टू बायर्न. लेकिन भाई फेब्रिशियो का लेटेस्ट वीडियो देखिए, उसमें नजर आ रहा है डिलीट का जो बिड है ना, बायर्न अभी क्लोज भी नहीं है. डिलीट का वो लोग अभी भी 100 मिलियन यूरोस मांग रहे हैं, उनका है 70 मिलियन यूरोस. तो हो सकता है डिलीट माइट स्टे इन यूवेंटस, क्योंकि उन्हें ब्रेमर भी नहीं मिलने वाला, कुलीबाली भी नहीं मिलने वाला, और किएलिनी और डिलीट दोनों नहीं जा सकते. तो इन माय ओपिनियन देयर इज स्टिल अ चांस कि डिलीट माइट स्टे इन यूवेंटस, और यूवेंटस आर क्रिएटिंग मैडनेस इन द मिडफील्ड. तो हु नोज. तो इसलिए मैंने पोल में डाला है एवरीवन. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. यस, अमेरिकन गोलकीपर, एग्जैक्टली. We shouldn't even talk about these players. Why? Who doesn't want to come to our club? Well, 21st century Akash, that's a reality. It is business. So it's jobs at the end of the day. Unfortunately, it is in conversation. But I hear you as a fan. Can just thrive in EPL? In 5 at the back, yes. In 4 at the back, I don't think so. He's great. So now we can use him like we use Courtois when we loaned him at Atletico. I don't think it's that level, but let's see. Hopefully he is, and he comes back and actually does not do a Courtois eventually. Frank Lampard moved to City. Well, he didn't directly move. New York, he went, and then New York say he was brought on because of I think there were financial reasons, if I remember right. Our City wanted players, and they couldn't technically loan from outside their club or something like that. Correct me if I'm wrong, but it was something like that. ऐसा नहीं है Frank Lampard directly moved to City, but I didn't like him playing for City. That's for sure. Mutu absolutely guy had an ego of Messi and skill set of Nketiah. Nketiah by the way better है आज के दिन में, but Mutu on this day was good as well. See Fabricio's tweet. उज्जवल बोल रहे हैं, चलो जाते जाते देख लेते हैं भाई Fabricio के tweet में, because yes, we have to set up the FIFA stream भी, so that is going to be at 11:30. And yes, ये already share कर दी है CFC Blues. तो again big up भाई उज्जवल और CFC Blues. Yes, CFC Blues has already shared it, and this is what मैंने highlight किया. Absolutely, thank you CFC Blues again. And yes, this is breaking news again, people. Why did Mata left for Man United? Because he was not played in his position under Mourinho. Mourinho wasn't able to get him in the 11. He was 2 times Premier League Player of the Year back to back for Chelsea. That is Chelsea Player of the Year. लेकिन हाँ,
I would say that पैसे मिल रहे थे for a player who's on the bench, who's coming as a sub, or he's not one player जो has such an impact as a sub, so he rather go there. लेकिन वहाँ जाने के बाद things change for him as well. So bad luck to Manchester United and Mata, man. That's all I would say, and Chelsea as well. हमारा हमारा पास भी था very good goalkeeper. They are not so good. They are, अरे you cannot generalize football, please. Come on. I know what you mean, but you cannot generalize my opinion. Okay, Nizar Kansela ने बोला Chelsea are ready to pay Kalidou Koulibaly 7 million pound a year plus 1 million in bonuses, which he's ready to accept. Napoli yet to accept any offer, but Blues ready to pay close to the asking price. वेल नापोली के हाथ में भाई फिर से कालिडू कुलिबाली थर्ड टाइम लकी हो जाए. हमने पहले भी 2 बार किए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स. यस ही इज नॉट दैट प्लेयर जो थे उस समय, बट राइट नाउ आल्सो इज अ बेटर अवेलेबल प्लेयर. भैया ये ऑस्कर कहाँ? ऑस्कर अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज प्लेइंग का चाइनीज लीग में खेल रहा है ना ऑस्कर. एक सेकंड मैं चेक ही कर लेता हूँ ना क्विकली. आज तक मुझे या चाइनीज सुपर लीग में खेला शांघाई. He's playing good. He's playing well. Lekin again, not that level. In a strange way, Oscar, in my opinion, not directly but indirectly, was the reason for Kevin De Bruyne हम जाने दिए, right? Not Willian. Lot of people say Willian. नहीं, मैं बोलता हूँ Oscar and maybe Andre Schürrle दोनों coming was kind of the reason, in my opinion, in that season. लेकिन भाई काफी discussions हमने किए हैं. Let me know if I missed anything which is kind of important to be discussed. Right now we can quickly discuss in a minute. लेकिन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन जो भी है यहाँ पर भाई, एक तो ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पर भी दे दिया करो थोड़ा सा सपोर्ट. काफी अच्छा लगता है, काफी लोग करते हैं. बिग अप टू देम, बहुत प्यार. लेकिन और भी ज्यादा दे दिया करो और टू इंडिविजुअल वीडियोस. बट डू नॉट फॉरगेट दिस, और दिस इज समथिंग दैट आई एम सेइंग. डू नॉट जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, बट ये वाला, अरे ये वाला join live 11 p.m. IST this Wednesday because we have a special guest. बहुत मुश्किल से किया है, तो यार आ जाइए सब. छोटा सा स्ट्रीम है, सो लेट मत आइएगा, बस इतना है. Ankit, happy with Sterling? Yeah, I've reacted enough. I think you can see my thumbnails if they are kind of speaking for itself. I'm happy. Yes, not the best, but definitely happy, man. Definitely happy. We needed someone who's more Premier League proven and more confident in front of goal, and someone who's more direct. He kind of fits those bills. Or someone who wins penalties. I don't agree with his way of winning penalties, but he's one of them. आपने इंजीनियरिंग या मैंने इंजीनियरिंग की है, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर में. बट डजंट मैटर यार, डू व्हाट यू वांट. एब्सोल्युटली यस. Barca getting both Raphinha and De Ligt. Biancho आ गए हैं Barca Ultra, and also Lewa is evident that no matter what, Barca is one of the best in Europe and best players want to play for Barca. The pull and might of Barca is fire. I cannot deny that. But do I like that as an opposition fan? I don't. वो भी सच है. लेकिन it doesn't mean that we are salty. It just means that यार थोड़ा सा basically as in history में you cannot always live. You have to be in the present, and that Xavi is proving. Xavi is proving that he's creating a monster of an attack already. Let's see. As in for Barca fans, they clicked all together. लेकिन लग रहा है हो रहा है भाई. लेकिन Frenkie leaving also, I don't know, midfield में थोड़ा सा cover कम है in my opinion. I really feel so because Kessie, as much as he's great, he's not yet proven at La Liga level still. I know La Liga level, Serie A level, you won't really compare. Like, I'm just putting it out there. And in a Barca system. Blackburn, yeah, American काफी goalkeepers थे यार, काफी goalkeepers थे. I know Brad Friedel was there. Spurs had यार, Spurs का goalkeeper, American goalkeeper नाम भूल रहा हूँ. I don't know who's he. I just forget the name. But yes, यार जाने से पहले we have a new member in the house. समर्थ जोशी इज अ मेंबर. भाई समर्थ मैं देखता हूँ कौन सा लेवल पे किया हो, लेकिन इट डजंट मैटर. आप एक इधर ऑलमाइटी फैन हो, या ऑलमाइटी स्काउट हो, या ऑलमाइटी कोच हो, ऑलमाइटी गोट हो, या बेसिकली ऑलमाइटी बोर्ड मेंबर हो, डजंट मैटर. Everyone, you're more than welcome, and of course, like I've been saying, all the members, whatever contribution you make, whatever super chats I'm able to get, all goes back to the channel once I get it, to kind of upgrade the channel of the channel. जो आप देंगे मुझे डीएम में आप बताइए, मेंबर्स स्पेशली, कि what is it that we need to change, what is it that आप you would like to see on the channel. We'll try and bring that on as well. लेकिन always, like I say, do not forget to like, share, subscribe, not only to us but also to our fellow streamers. Everyone works hard a lot, and of course without you guys we cannot continue. आज रात को Almighty Sports Plus पर ज्वाइन कर लेना. Hopefully 11:30 का 11:45 कर रहा हूँ मैं. 11:45 we are live for a FIFA session, FIFA 22. Yes, and not just that, चिट चैट तो करेंगे भाई, क्रिकेट की बातें वहां भी करेंगे थोड़ा सा. And maybe even transfers, who knows, next 2 घंटे में Sterling announce हो जाए. I'm just kind of hoping. Let's see.
अंकित मींस काम चलाओ प्रो मोहित भाई चेक करिए स्ट्रीम वापस, आप लेट हो लेकिन थैंक फॉर ज्वाइनिंग, लाइक कर देना स्ट्रीम को और चेक करिए स्ट्रीम को शुरू से, मैंने काफी बात किया है उसके बारे में और मैंने एक लॉजिक लगाया कि यार भाई चेल्सी अगर मूव होता है, वाह वाह, मतलब मार्टा's goal against Spurs, Marta's goal against United, David Villa would remember that. Let's see, yeah, we had at one point, let's see, well, oh yes, absolutely, Samar, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये. So this guy actually is basically going to be signed with the Barca. Looks like it. लग रहा है लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, if I'm correct. एंड मैंने देखा था ये न्यूज़. Absolutely, thank you for sharing it. Of course, Aston Villa के है, where we know that we have seen the guy. He's pretty good. But again, is he ready? Maybe Barca वही है, scouting करती है भाई, सही. I do agree, Frenkie De Jong leaving. Yeah, that's only thing I'm a little bit concerned about for Barca's point of view. हाँ, Pablo Torre अगर कर सके in the first season, brilliant. लेकिन मुझे लगता है I don't think you can expect much, from Pablo Torre right now. Maybe you never know. Nico or Ricky Puig might be the answer. They might upgrade themselves. Sergio Roberto might come back. Who knows? Sudden से FIFA में तो काफी अच्छा कर रहा है. हमने कल देखा था. लेकिन yes, again यार, 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया. And I want to set up that stream for FIFA. And again, like I'm requesting you, please do not forget tomorrow 11 p.m. and do not forget to like the stream and share it as well as possible. Let me know in the comments if you're late or if you're coming on now as well, that who is that transfer that your club is looking forward to most this summer. And Manchester United fans, congratulations for the win. Chelsea fans, don't worry, an announcement is coming and a couple more very soon. And pre-season, हमने cover करना है. See you tonight on Almighty Sports Plus and tomorrow here as well. Bye.